Sardar Confucius Imam Kasrani versus Sardar Mir Badshah Khan Kasrani and another. Mr. Uzair Bandhari is here. We had appointed 3 amicus. Ms. Reema Umar could not come. She had just arrived, but she submitted something in writing. इनको भी दे दीजिए, ठीक है? And Mr. Uzair Bandhari and Mr. Faisal Siddiqui, is he here? I don't see him in the courtroom, sir. He did mention that he's got some case in the High Court. So, Attorney General, would you like to continue? My Lord, and I'll take 30 minutes and I'll conclude my... Opposed, my lord. So, and who else is opposed to the? वो सब्जवारी साहब थे. Sabzwari sir. We just want to hear your version first, then we can. Then you can also respond to maybe that may be better than to save time. Ji. My lord, to start with, there is a writ petition pending before Lahore High Court, Lahore, and in which reply by the Attorney General Office has also been filed. And next date of hearing is 9th of January. जी जी आप इधर किस केस में हैं? Which is your case here? My lord, I am in 880 of 2015. I am for the respondent number 1 and respondent number 3. नाम बता दें. Arif Hussain Arif Hussain versus... You are for Arif Hussain. I am for Fayaz Ahmed Khan Gauri and Sajadul Hassan. Excellent. Fayaz Ahmed Khan Gauri Ahmed Khan Gauri and Sajadul Hassan. Sajadul Hassan. My lord. 1 and 2. Respond. 1 and 3. 3. And this is civil appeal or civil petition? Which number is it? Civil appeal arising out of Civil appeal number? 880 जी ठीक 2015. Arising out of? Arising out of Election Commission's judgment. ठीक चलिए जी बताइए. My lord, my first submission is regarding the maintainability of these proceedings, because my lord has clubbed all the cases together. There are appeals as well, and there is a petition under 184(3) by the Supreme Court of Pakistan, and there was objection on that petition, and there was a chamber appeal. That is also fixed here. My first submission is, under what provision of law these proceedings are being conducted? Number 1, are they appeal under Representation of People's Act or Election Act? I am before my lord in appeal under Representation of People's Act. But there is this 184 petition also pending. आप अपना केस चलाए ना? मैं अपना केस में चलाता हूँ. My submission is कि इस अपील में my lord ने सारे की सारे petitions को क्लब किया है. आप अपना केस चला लीजिए ना. Don't repeat it. We've heard that point. Sir, my lord, my submission is: are my lords exercising power under 187? Or 184(3). Please proceed with your case. My lord. My lord, I have 4 submissions. जी. अपना नंबर दे दें petition का. Civil appeal 880. 880. Civil appeal 880. Respondents 1 and 3. जी. My first submission is: the court of law mentioned in Article Supreme Court in its appellate jurisdiction. I'll just submit the brief as well. जी. The declaration mentioned under Section 160 or Section 62(1)(f) is outside Section 42 of the Specific Relief Act, because Specific Relief Act puts a certain conditions
to obtain declaration. It has been held by the superior courts that the proceedings under Section 42 are not exhaustive. Courts can issue declaration without satisfying the conditions under Section 42. I rely on two case laws. One is AIR 1967 Supreme Court 436. AIR 1967. Supreme Court 436. जी 11. 11 my lord. जी It says, in our opinion, Section 42 of the Specific Relief Act is not exhaustive of the cases in which a declaratory decree may be made, and the courts have power to grant such a decree independently of the requirements of the section. The same view has been expressed by Mr. Justice Mansoor Ali Shah while sitting as judge of the Lahore High Court in PLD 2010, Lahore 583. जी That is para 24, my lord. In the Indian Supreme Court judgment, My lord, you have read this line that Section 42 is not exhaustive. not exhaustive. So let me just ask the question. Is it not exhaustive in terms of the Specific Relief Act or exhaustive with regard to constitutional jurisdiction as well? I mean, you've just read that line and I can go along with that. The Section 42 may not cater for all eventualities. My lord. The question here is not just that, but it is a question whether the declaration that is being envisaged, My lord. can it be a declaration by a constitutional court, for instance? It can be declaration by constitutional courts as well. Where does this judgment say that? The one that... It does not talk about constitutional court, but the judgment now I am referring, it talks about constitutional court as well. ठीक नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं है इस पे? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस पे नहीं है। अच्छा 42 आपका मतलब है तमाम कोर्ट्स पर एप्लीकेबल है? मैं ये कहता हूँ कि 42 is applicable to civil court, but civil court can also give declaration without satisfying the requirement of Section 42. Similarly, other courts can also give declaration. The High Court in this case was following the Supreme Court precedents already settled. So is there a Supreme Court judgment on this point? There is a Supreme Court judgment, my lord. ठीक अच्छा नेक्स्ट पॉइंट आपका I will read para 24 of Lahore's judgment. that is taking cognizance of the High Courts are bound by judgments of the Supreme Court. So there is no question about that. The High Court had to follow it. But now we are the Supreme Court and a larger bench. My lord. जी Now, the next point आपका next point is a court of law has not been defined in Article 62 or anywhere else in the Constitution. But superior courts has held that it's a court of plenary jurisdiction. That is PLD 2017, Supreme Court 265. Can you repeat the citation? PLD 2017, Supreme Court 265. That is at page 490. 490. 490, my lord. जी It's
It's in the second part of the page. It starts with the expression "a court of law" has not been defined in Article 62. Which placidum are you referring to? Double S, my lord. Double S. Ji. From the middle. Ji. Read it. The expression "a court of law" has not been defined in Article 62 or any other provision of the Constitution, but it essentially means a court of plenary jurisdiction which has the power to record evidence and give a declaration on the basis of the evidence so recorded. Such a court would include a court exercising original, appellate, or revisional jurisdiction in civil and criminal cases. But in any case, a court or a forum lacking plenary jurisdiction cannot decide question of this nature, at least when disputed. What is plenary jurisdiction? Plenary literal meaning is a court exercising full powers. All the powers. Plenary jurisdiction means where the original jurisdiction has been exercised under Section 42. If you mean to say that Section 42 of the Specific Relief Act can be exercised by the High Court under Article 199 No, my and lord. 184 and 185 by the Supreme Court. No, my lord. So declaration means for all such type of declarations, the case must be under Section 42 or not. It need not to be under Section 42. Then- that is my submission. Then how the declaration can be granted in any other law? Declaration can only be granted by election tribunal. That is my submission. It means that it exercises the jurisdiction under Section 42. Not under 42. Under Representation of People's Act or Election Act. That is the only forum. And after recording evidence or without recording evidence? After framing issues, now I will come to the power of the election tribunal. This can be exercised by the High Court directly It cannot be exercised by and the the High Court. Supreme Court directly. No, my lord. Supreme Court in appellate jurisdiction. Your last argument is in contradiction with the judgment you have relied. 490 पे आइए दोबारा. My lord. जहाँ से पढ़ा था उससे दो लाइनें ऊपर. Even the election tribunal. Even the election tribunal, unless it itself proceeds to give the requisite declaration on the basis of the material before it, would not disqualify the return complaint where no declaration, as mentioned above, have been given by a court of law. Now I will demonstrate how I say election tribunal is court of plenary jurisdiction. तो बताएं, provisions बताएं ना. कि वो नहीं है, वो भी नहीं कर सकता unless by the court of law. He disagrees with that. He says you're गलत है. Let me explain the formation and the power of election tribunal. आपका आर्ग्यूमेंट ये हुआ ना कि सिर्फ प्लेनरी जुरिस्डिक्शन के कोर्ट्स डिक्लेरेशन दे सकते हैं और आप कहते हैं कि अदर देन द नॉर्मल रेगुलर प्लेनरी कोर्ट्स लाइक सिविल कोर्ट्स एंड ऑल द इलेक्शन ट्राइब्यूनल आल्सो फॉल्स इन दैट कैटेगरी. दिस इज योर आर्ग्यूमेंट. This is my opinion. I और also say बताइए that कौन से सेक्शन में ये पावर in constitutional jurisdiction, show us the please provisions of the law. Election Act में कौन My से lord. provisions है declaratory jurisdiction exercise करने की? my lord, उसमें मैं आ रहा हूँ. Basically, election tribunal is constituted. No, election tribunal is a different thing. आपने कहा ना election commission में ये power exercise. I'm saying election tribunal. Election tribunal की जो power है वो तो फिर civil court के power हैं उसके पास सारे. Yes, my lord. They can exercise the civil court powers and they can record evidence because My lord. before declaring any person disqualified, they must be. Not true. The provision. But this debate won't resolve what the problem before us is. Let us not go into the powers of the election tribunal. Here, the power is, it's not a question of election tribunal exercising a power or election commission exercising a power. It's the power being exercised by a constitutional court. Now, you premised your argument by saying court of law is not defined anywhere in the Constitution. Can I first of all correct your premise and take you to Article 175 of the Constitution? If you read the Constitution provision, the chapter is titled The Courts. And now please read 175.1 and then 175.2. So I may be subject to correction, but there are courts of law and the courts, Supreme Court and the High Courts have other powers as well. Please read. My lord.
there shall be a Supreme Court of Pakistan, a High Court for each province, and a High Court for the Islamabad Capital Territory, and such other courts as may be established by law. By law comes here. Now read subsection 2. No court shall have any jurisdiction save as is or may be conferred on it by the Constitution or under any law. Now, first of all, then the court has been defined. There are Supreme Court, there's the High Court, and any number of courts that a law may enact. Correct? My lord. But so it is a clear distinction between the Supreme Court, the High Court, because the Supreme Court and the High Court exercise, and I presume this is the distinction, there is appellate power of the Supreme Court and the High Court where it acts like a court of law. My lord. And then there is an extraordinary constitutional jurisdiction of these courts, my lord, which it does not in the classical sense act as a court of law, but as a constitutional court. Therefore, they are called constitutional petitions. And we used to in earlier write extraordinary constitutional jurisdiction. So it's an extra jurisdiction conferred by the onto the superior courts of Pakistan. And now we come to sub-article 2. No court shall have jurisdiction save is or may be conferred on it by the Constitution or by or under any law. Now, Article 199 confers jurisdiction under the Constitution, which is in addition to appellate jurisdiction. Article 184(3), other articles of the Constitutions confer certain jurisdiction onto the Supreme Court. Does Article 62(1)(f) confer any jurisdiction on the Supreme Court? That is the question. Because there it says court of law, not the Supreme Court, not the High Court. My lord. So surely we cannot interchangeably use these terms. If it had not used the words court of law, which it does, so then it is, otherwise this power should have been mentioned in Article 184(3), or such powers as can be exercised by High Court under Article 199 or whatever it used to say. So we cannot just disregard the two concepts of a constitutional court and a civil court under Section 9. My lord. You assumed a lot of things. Because when I use the word, it has not been defined. The phrase court of law is not defined. It is. Because I've just read 197. Supreme Court and High Court, that's the word they use. I am just referring to the phrase. Are you saying Supreme Court is one and the same court, but then it's exercising appellate jurisdiction as opposed to extraordinary constitutional jurisdiction? No, my lord. So technically speaking, they're two separate creatures. My submission is anything arising out of election tribunal is decided by the Supreme Court in its appellate jurisdiction. Correct. Any declaration in election tribunal or by the Supreme Court in appellate jurisdiction is covered under 162(1)(f). Not any power under 199. No, थोड़ा सा और clarify कर देना. Election tribunal will exercise powers only under the law, which used to be the Representation of People's Act and now is the Election Act of 2017. Correct? My lords. Therefore, when the Supreme Court is exercising such powers, it cannot have more powers than the Election Tribunal or the Election Commission of Pakistan. Unless you can show that the Election Commission of Pakistan and an Election Tribunal can also disqualify for life, then that power, of course, will be with the Supreme Court as well. Otherwise, it will be an additional power given to the Supreme Court under 62(1)(f). Mr. Khurram, could I just summarize what you're trying to say? You're saying that the declaration from a court of law under 62(1)(f), court of law is only the court of law under the plenary jurisdiction, plus the election tribunal, and as a consequence, the appellate forum that hears the election tribunal. These are the plenary jurisdiction plus these two, which can give such a declaration. There can be no declaration coming from the High Court. In 199. That's what he's saying. That's what I'm saying. What I'm submitting is plenary jurisdiction for 162(1)(f) is only exercised by election tribunal.
and Supreme Court in its आप दिखाइए ना, हमें लॉ से दिखाइए ना, आप show us from the law. That's what I'm saying. Only show us from the law. Because PLD 2017 Read the where is the election substantive act. law? Show us ROPA or election act. My lord, रोका मैं आपको दिखाता हूँ. वापस दिखा दें इलेक्शन ट्रिब्यूनल. My lord, Are we going to ROPA first or election act first? first I'm going to the Constitution and then I'll go to ROPA. जी. And I'll refer the Election Act sections as well. Article 219 creates the election tribunal. It says duties of commission. The commission shall be charged with the duty of appointing election tribunals. They come to the point. Then Article 22 to 5, election dispute. हाँ ये बात. No election to a house or a provincial assembly shall be called in question except by an election petition presented to said tribunal and in such manner as may be determined by the Act of Parliament. Then Representation of People's Act, Section 52, which says how proceedings are initiated. Representation of People's Act, Section 52. My lords, Constitution, you've relied on 225, I relied on 219 and 225. 19. 219 for the creation, 225 for the dispute resolution exclusive power. And 62 or what? Section 52 of Representation of People's Act. ठीक है. No election shall be called in question except by an election petition made by a candidate for that election, hereafter in this chapter referred to as the petitioner. Then Section 57, appointment of tribunal. Who appoints the tribunal? For the election petition under the Act, the commissioner shall appoint as many election tribunals as may be necessary. Then Aren't you undermining your own proposition when you rely upon Article 225, which is a very strong categorical language? No court. So how is the Supreme Court then can give a declaration under 62(1)(f)? Supreme Court. Read 225 again. It's very categorical. That's why I've submitted. Supreme Court can only give in its appellate jurisdiction, coming from election tribunal against the decision of. I think there are slightly two different propositions which you're mixing up. One is the competence of category of the court who can declare. First. Second is to what extent. For instance, in a civil suit, a civil court has jurisdiction to decree the plaint, dismiss the plaint, right? Or anything in between, reject the plaint or whatever. But it cannot tell a plaintiff to go and stand in the corner. My lord. That jurisdiction it doesn't have. My lord. Unless the law confers on it. Yes, you can ask the plaintiff to go stand if filing a frivolous suit. My lord. So let's not mix up the two concepts. Where if you read 225, it says no court, then that excludes the Supreme Court as well. Then the Supreme Court's power is only limited to acting as an appellate forum of the Election Commission of Pakistan or the Election Tribunal. Where will it get, where it is assuming additional powers from? Because Section 67 of ROPA gives 67. That's Three. good. Appeal lies to the Supreme Court. 67(3). G. Appeal from the decision of the election tribunal, it lies to the Supreme Court. Please refer to that provision of the Election Act or ROPA, which says 62(1)(f) can entail a lifetime disqualification. वो कहाँ लिखा है? मैं आगे आ रहा हूँ. मैं अभी नहीं आया उस पर भी यार. आगे power of tribunal है, which says that. Where is that section? आपके आर्ग्यूमेंट के मुताबिक तो फिर ट्रिब्यूनल ही कर सकता था ना. That's it. तो फिर आपके आर्ग्यूमेंट तो म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव नहीं है. व्हाट यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू आर्ग्यू, मतलब क्या सुप्रीम कोर्ट ने सही किया या गलत किया? मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, डिक्लेरेशन दे सकता है ओनली इफ इट हैज अरीजन आउट ऑफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल.
ठीक है, अभी जरूर cannot give declaration on its own. हाँ तो ये फिर तो आप you are not supporting Samula Baloch. Then you are not supporting Samula Baloch. To some extent I am, because in most of the cases disqualification arose out of election tribunal. In some cases they arose out of writ jurisdiction. In some cases they arose out of pre-election dispute. You are only supporting those I am only supporting those cases where they have gone through the trial. Okay, ठीक है, I got They the have point. recorded evidence. got that point. Got the point. ठीक है. तो आप कहते हैं कि प्री इलेक्शन Position is totally changed. वो नहीं आ सकते, वो नहीं आ सकते because there is no evidence recorded. वो तो वैसे सिर्फ लिमिटेड हो गया ना, सिर्फ इलेक्शन ट्राइब्यूनल से जो अराइज कर रहा है। My lord. अब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं। पहले बस क्लैरिटी आ गई ना, इसीलिए पूछा था आपसे कि जरा वो आर्ग्यूमेंट कुछ तो मैं इसमें सेक्शन 64 में पावर ऑफ द ट्रिब्यूनल है, इट हैज ऑल द पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट। वो ठीक है, I got it now. अब आगे मैं सिर्फ ये दिखा दूं, ग्राउंड्स फॉर डिक्लेयरिंग इलेक्शन ऑफ रिटर्न्ड कैंडिडेट वॉइड, दैट इज अंडर सेक्शन 68. व्हाट एन इलेक्शन ट्रिब्यूनल कैन डू, स्टेट ऑफ रोपा, that is section 68. The tribunal shall declare the election of the returned candidate to be void if it is satisfied that the nomination of the returned candidate was invalid, the returned candidate was not on the nomination day qualified for or disqualified from being elected as a member. Wait a minute. On the date of submission of nomination paper, he was not qualified. Yes. So it means before presenting the papers, there must be some declaration that the person was not qualified. My lord. And in result thereof, his nomination papers should have been rejected straight away. That can only happen. That can happen at the first stage, when That's the what I'm nomination saying. papers are submitted. That is my, and that is also my And argument. secondly, after election, post-election, Yes. the tribunal can de-seat the candidate on the basis that prior to election you were disqualified. That is my second argument when I'll distinguish between Article 62 and Article 63. My question is whether under 62, whether somebody can be disqualified. Or 62 says if somebody is earlier disqualified, so his paper should be rejected. He has to be earlier qualified on the date of the nomination paper. So 62 does not clearly say that the person who is scrutinizing the documents has the power to disqualify somebody. The date is the nomination date. And we've understood that point. My lord. If I can just re-articulate my colleague's question, this 68, I've just run through it. My lord. It talks about disqualification. My lord. The nomination paper आपने दिया, I'm the returning officer or the election commission or the election tribunal. I say you're disqualified for you're 24 years of age, for instance. You can't contest election. ठीक है? You are a bankrupt. You can't contest election. You have not paid your bijli ka bill. You have not contested. You're not a graduate, etc., etc., etc. This paper gets rejected. Where is the power of the commission or the tribunal to say that you're disqualified for life? The next election comes along, you are disqualified in this election, you again present your paper. I again look at your papers, and again I find, no, you are not qualified for these reasons. How an earlier disqualification, suppose now I'm 25 years of age, suppose I filed 24, naturally I can't contest elections. Or I'm a bankrupt, now I'm not a bankrupt, or I'm a loan defaulter, I've repaid the entire loan, or I've not paid my electricity bill, I've repaid everything. So that will not travel through. Where is section 68 say that once disqualified, you're disqualified for life? Where is that provision? My lord. That provision has only been inserted by Samula Baloch. That's what I'm saying, that for the time being, I am just arguing on one point, that is who can give the declaration of We disqualification. agree with you. First, There is no dispute now, on second that. thing is to answer my lord's question, I have to create a distinction between 62 and 63. That is my second solution. No, first of all, where is the power in the court, in this court to do this? That is the essential question. Court has to determine whether he was qualified on the day of ठीक है। nomination under 62, 63. वो रिजेक्ट कर देना उसे, और अगर उसने गलत बयानी से किया उसको रिजेक्ट कर हो दे। गया। पर नेक्स्ट इलेक्शन जब आ रहा है तो हाउ इज ही स्टिल डिस्क्वालिफाइड, ये बताए ना सिर्फ पॉइंट। Now
Now I will come, to answer this question, I will come to my second देखिए एक submission. आदमी ने एक रोपा में चेंज हुआ कि जी ग्रेजुएट होना चाहिए, एक ग्रेजुएट नहीं उसने दरखास्त फाइल कर दी, वो मेट्रिकुलेट है, नेचुरली ही विल बी डिस्क्वालिफाइड। अगले इलेक्शन में ये कंडीशन है ही नहीं, तो ही कांट बी अ लाइफ टाइम बार, इट्स इलॉजिकल। That's what I'm saying. Article 62 may, if there is a declaration that person is not honest. Why he was not honest? Because in my case, Now you've taken a leap of faith. no, my lord. No, लेकिन अब आ जाती बात ये leap of faith वाली. So you are saying honest. Now honest. Suppose okay, let's take another case. Make it simple. He honestly declares in his nomination papers that he's a matriculate. He honestly declares in his paper that he's 16 years of age. Honestly, उसने लिखा 16 साल का हूँ. Consequence तो वही होगा ना. My lord, if he is not 16 years of भाई वो age, कह रहा है मैं हूँ 16 साल का. if he is not 16 years of age and he is 14 years of age, आप बात नहीं समझ रहे हैं ना. My lord. 25 साल का सिर्फ लड़ सकता है ना इलेक्शन. वो सचमुच कहता है मैं 16 साल का हूँ, वो सचमुच कहता है मैं ग्रेजुएट ना हूँ. आप इसको नेचुरली कांट कंटेस्ट he इलेक्शन. can't contest election. सो ये जो ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी वाली बात तो बिकम्स इरेलेवेंट. इट्स अ फैक्चुअल डिटर्मिनेशन. That's what I'm saying. Fact. Who has to do the factual determination? चलिए ओके आगे बढ़े. मैं Only election tribunal through recording of evidence. We've understood the first point, please. Now my Move on second to the point. next point, please, the duration part. इसी पे देखे ना, जो फर्स्ट आपने कहा कि प्री इलेक्शन जो उसकी नॉमिनेशन पेपर की रिजेक्शन है, दैट डज नॉट कवर द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन 68. वो तो होने ही आफ्टर द इलेक्शन है. After the election. तो इसलिए वो तो जस्ट रिजेक्शन ऑफ द पेपर्स that's एज पर योर आर्गुमेंट्स. That is my argument. कोई डिक्लेरेशन कोई फर्दर नहीं होती. वो क्वालिफाइड था या नहीं था पहली डेट के ऊपर, वो तो रिटर्निंग ऑफिसर ने चेक करना है ना. अगर रिजेक्ट होगा तो अपील हो जाएगी, अगर कोई अपोज करेगा तो भी अपील हो जाएगी. ठीक है ना. मगर बात क्वेश्चन इज दिस के आफ्टर सेवरल इयर्स वो कहेगा इवन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग योर नॉमिनेशन पेपर यू वर डिस्क्वालिफाइड. दैट डिक्लेरेशन इज टू बी गिवन बाय विच कोर्ट? Election tribunal. इलेक्शन ट्रिब्यूनल. We've understood that, Mr. Khurram. चलो अब Now I will Khurram, do- let's proceed further. You- एक बात इसमें और बता दें. इलेक्शन ट्रिब्यूनल क्या डिस्क्वालिफिकेशन 60 आर्टिकल 63 से हट कर दे सकती है? और अगर कोई डिक्लेरेशन वो कर दे कि इज डिस्क्वालिफाइड और वो डिस्क्वालिफिकेशन 63 में नहीं आता, नहीं दे क्या उसकी बुनियाद पर नहीं दे फॉर इवन फॉर सिंगल डे ही कैन बी बार्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग? Election tribunal has to decide on the basis of 62 for qualification. No, and 63. disqualification in 63. This is clear. If any declaration is made by the tribunal, My lord. which is not in accordance with Article 63, whether on that basis, even on the declaration of tribunal, somebody can be debarred from life or even for a day. No, my lord. Without trial cannot. When trial is conducted, the tribunal come to the Even after trial, it cannot. वो कह देता है कि disqualified. Without the ground given in 63, he cannot. Mr. Khurram, could we just summarize what's happened? Your submission is that, first of all, disqualification can only come through a plenary court of plenary jurisdiction, plus the election tribunal and the appellate forum hearing that election tribunal's appeal. That's one. And declaration cannot come from any other Small source. change here. Not मैं कुछ small. और कहना चाहता My हूँ. lord. So this we've understood. I'm just saying that the premises on which Samuel Baloch proceeds is that once that declaration is in the field, that you're disqualified. My lord. Unless that declaration is set aside, you remain disqualified. That's the premise of Samuel Baloch, number one. Number two, Samuel Baloch also says that declaration is not right in your face, saying that you infer from the circumstances of the case. For example, वो कहेंगे कि आपने misdeclaration की है, इससे infer कर रहे हैं आप honest नहीं. Because nobody is directly, इस पे तो evidence नहीं ना आप honest है, I mean आप infer कर रहे हैं. That's what Samuel Baloch also says. So you construct it, you say कि आपका form गलत था, आपका ये गलत था, इससे हम construct ये करते हैं कि आप अमीन नहीं हैं. These are the two premises on which Samuel Baloch proceeds. Now we just need to understand whether at all the fact that the disqualification stands can continue forever, and if that disqualification was taken into a criminal proceedings and he went through age 63 age and went through a actual conviction, he comes back, and there are a number of other offences where he commits even a heinous crime, he comes back. तो बस इसका हमें आप बताइए कि the fact that Samuel Baloch goes on the premise that declaration on the civil side done will continue as
long as that declaration is set aside. My Lord has properly rephrased Samuel Bloch, but my argument is a bit different from that. Right. My argument is any declaration coming from a high court in a constitutional We jurisdiction. understood, that's not a declaration. So that's all not a those declarations So are the out. only court of plenary jurisdiction is election. Understood, आगे चले. Now, the whole argument revolves around whether Article 62 and 63 are inherently same or distinct. If they are inherently same, they can be used interchangeably. Then we can interpret 62(1)(f) in view of 63(1)(h). But if they are distinct, then we cannot interpret these two. We cannot try to resolve the ambiguity. So I have to demonstrate that Article 62 is distinct than Article 63. Is it not dependent? Article 62 is not dependent upon 63. No, my lord. How do I demonstrate that? If I just go to Article 62, it says, a person shall not be qualified to be elected or chosen as a member of Majlis Shura unless it talks about an event prior to the election. Yes. I raised this जल्दी करें ना, ये पढ़ चुके हैं। yesterday. My lord, 63. I don't see much turning on your point, but chaleं, proceed with it. A person shall be disqualified from being elected or chosen as and from being a member of Majlis Shura if in 63 after the election, after the he becomes member, the event, any of the event given in 63 can trigger and he can be disqualified. But in 62, after he has election की आप बात no कर रहे हैं। event subsequent to the nomination can disqualify him. I don't agree with you. Because if that is the case, then a non-citizen can contest elections, which is not provided for in 63, which is only provided for in 62. So I don't think this, जो आपने distinction draw की है, I don't think anything turns on it. My lord, 62. He says he's a citizen of Pakistan. This provision is not found mentioned in 63. Suppose a non-citizen files in a nomination papers and somehow gets elected. So you mean to say that challenge cannot be made about him? I would not agree with that proposition. My lord, because the entire section of 62 has to be read in view of the opening clause. Article. It says a person shall not be qualified to be elected or chosen. कुछ हुई तो नहीं था. I think America. Court where he was declared non-righteous. So what are the likelihood? No, ये बात आपकी, sorry, doesn't hold any water. Let's read first disqualification. He is a citizen of Pakistan. Suppose Mr. James Gray from America comes and contests, born American citizens, never been a Pakistani citizen, and gets elected. Please wait. Now go to 63(1)(c). He ceases to be a citizen of Pakistan. That is, a person was a citizen of Pakistan, has now taken on citizenship of America. So you are saying, yes, once that somehow Mr. James Gray got elected, you can't touch him now. But yes, sorry to say, yeah, आप ऐसा distinction not draw करें. I am not saying this. Mr. Khurram, there's one way of looking at it. Just read the first line of 62 and the first line of 63. It will show to you that it's interchangeable. There is hardly any difference. A person shall not be qualified to be elected. रुक जाएं. आप 63 पढ़ें.
A person shall be disqualified. from being person elected. shall be disqualified. From being elected. So From both being are elected. happening before the election has taken place. Elected The or word is- chosen, हाँ, वही बात है। दोनों चीजें एक है, फर्क नहीं पड़ना disqualified or qualified है, but it's synonymous. I mean, it makes मतलब sense. 63 का जो second तो फर्क क्या पड़ना है इस आर्ग्यूमेंट से आपके? How will it support you? So because if I can convince my lordships that they are two distinct sections because of their... Suppose there are two distinct sections, but what will turn on it? ये बताएं ना. Then we have to interpret 62(1)(f only. तो वही उसी भी तो आपको ले जा And we रहे do हो. not have to interpret 62(1)(f in view of 63(1)(h. चलें 62(1)(f) को कर लेना फिर आप. आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि 62 and 63 are distinct articles and we cannot interchangeably read them to give them a meaning. My lord. So उनको separate पढ़ेंगे, उनको separate. We've understood your point. आगे बढ़े. थोड़ा सा स्पीड कर ले if you don't mind. We don't want to leave this case unresolved. 10-15 more minutes. Now, when I distinguish that they are two distinct, then we have to read 62(1)(f) on its own. Every word has to be given its meaning. चले चले थोड़ा जल्दी करें. Mission is that when we will read 62, then as long as the declaration by a court of law is in field, disqualification will remain. तो उधर ही Court of law declaration is the Supreme Court itself. ये point पे आ जाइए ना. Supreme Court itself cannot give in any other jurisdiction other than in its appellate jurisdiction हो गया from ना the election आपने? tribunal. चलो अच्छा ठीक आपका है. फिर सभी वाला बिलोच वाला आर्ग्यूमेंट है ना कि once the declaration is there, 62(1)(f) has to be read alone. Once the declaration stands, disqualification stands. My lord. And it goes on as long as the disqualification. ठीक, So the question to you is that we have to look at the constitution in totality as a whole. Does it not appear odd to you that for other crimes as big as perhaps treason in G and others, you can always come back and contest election? It's not a lifetime situation. But for a civil wrong, which could be as small as committing a misdemeanor of misdeclaration or just lying through you've omitted one entry in a return, the punishment in a way is for life. But if I were to go murder somebody, if I would commit treason, if I were to kidnapping, I could come back and contest election. Where from the tribunal gets the powers for life time disqualification? It has declared. No, where from gets the powers to declare him Has for life? declared a decree given remains intact for all purposes. Fair enough, we've understood that. आगे बढ़े. हाँ, चलिए next point. No, this argument basically it lies in Islamic principles. If you look at PPC, out of all those offences, there are very few offences in which mens rea is dishonesty. My submission is wherever mens rea is dishonesty, we are talking about public office holder. जो आपने you just very casually referred to Islam, either back it up because I completely disagree with you. You have to back it up. If your contention is agreed, there were those who were violently opposed to Islam, and then they became Khalifs, Khulfa Rashideen. तो वो आ ही नहीं सकते थे फिर वापस. This just don't throw in Islam just like that. It is contrary to Islamic injunctions. तौबा का प्रिंसिपल है, राय रास्त पे प्रिंसिपल वापस आने का प्रिंसिपल है, मुस्तकीम शारे मुस्तकीम पे वापस आने का प्रिंसिपल है. All शुरू में तो 2-4 ही मुसलमान थे. I mean, we are. तो ये आप ऐसे just don't throw in Islam to give it a validity. No, my lord. What I am submitting is, if repentance or tawbah
when we look at it, रिपेंटेंस और तौबा की तो बात से आगे मैं चला गया हूँ. so now that's what I'm submitting. These are three things kept by God to himself. Number one, Not at all. Izzat Zillat. Not at all. Let me make my submission. No submission. You refer to the Holy Quran. You can't just make a submissions contrary to Islamic principles like this. ऐसे नहीं होगा. But I change the subject a little. Let me just introduce one other aspect. Let's stay on 62(1)(f). If you look at 62, some of the disqualifications or qualifications are mentioned in the Constitution itself, like he has to be a citizen, the age and all. This is specifically provided. 62(1)(f) brings in a disqualification from a declaration from another court under some law, not the Constitution. It is a declaration of disqualification declaration of contrary under some law. And if the law Parliament goes ahead and fixes that law and says any such declaration of that law has to be for 5 years, that is actually not tampering with the Constitution. It is providing that any declaration in 62(1)(f) is arising out of a law, not of the Constitution. Because court of law ne karni hai na disqualification. That disqualification is arising out of a law, and the Parliament goes ahead and says any disqualification under the law has to be for 5 years. So then, with that 5 years amendment brought in, isn't the period being provided for 62(1)(f)? Because the Constitution itself doesn't give an unlimited period. It is relying on a declaration coming out of a law. And law has been corrected and given a period. So there's a distinction. Had there been a constitutional provision, disqualification like age being 25, then perhaps, to my mind, legislation could not do it through ordinary legislation. Constitutional amendment was required. But in this case, the declaration emanates from the law itself. So law is being given a certain time frame. Is pe kuch roshni dal? My lord, it depends on the validity of the law. That's why I tried to argue that under what proceedings we are before my lordships. I rely on PLD 2012 Supreme Court 923, Baz Muhammad Kakar Federation of Pakistan. It is the case where Contempt of Court Act 2012. आपने सारा आर्गुमेंट सुना हुआ है. प्रोपोजिशन बता देना प्लीज. My proposition is through ordinary law, Parliament cannot amend the Constitution. No, fair enough. It has not amended the That's what I'm trying to tell you. Added in the Constitution, because how do I demonstrate that whether the court can amend the Constitution, court can interpret it? interpret in a manner to amend the Constitution or to read my lord. into the No, my Constitution. lord. So this is what we are asking from you, whether the interpretation can be done. देखिए इसमें एक बात आप ये आप कह रहे हैं 62(1)(f) में ये बताया गया है कि डिक्लेरेशन होना चाहिए कोर्ट से, और आपने कहा कि डिक्लेरेशन सिर्फ ट्राइब्यूनल दे सकता है. ट्राइब्यूनल अंडर सेक्शन 157 वो ग्राउंड्स बताए गए. ठीक, क्या उन ग्राउंड्स में ये बात है कि ट्राइब्यूनल इस बात पे आपको डिस्क्वालीफाई कर सकता है कि आप राइटियस नहीं हो, आप सजेस्ट नहीं हो, आप अमीन नहीं हो, आप सादिक नहीं हो? ऐसी डिक्लेरेशन आएगी तो 62(1)(f) इस्तेमाल होगा, अदरवाइज नहीं होगा. That's what I'm saying. That in my case, FA degree was forged, BA degree was forged. Trial can आप हमें डिक्लेरेशन कहाँ से आया आपके केस में? Election tribunal. देखिए खुरम साहब, एक चीज है, देखिए, स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, देयर इज नो कंफ्यूजन इन माई माइंड दैट to set aside a judgment, the premises on which that judgment stands needs to be taken away. So if the judgment stands on a law, then there could be an amendment in the law, and that foundation of that judgment on which it stands is taken away, and that judgment is nullified. If the judgment stands on the Constitution, constitutional amendment is required to take care of. There's no, as far as I'm concerned, no. I'm saying in this particular case, 62(1)(f) is not a disqualification. The judgment does not stand on 62(1)(f) as such. It stands on a declaration by a court of law. My lord. That declaration is not done through Constitution. That declaration must be of based on some law. That law now provides a period of 5 years for such declarations. Hence,
that premise, that declaration that's coming out of a law has been given a period. So wo khatam ho jati baat, 5 years then plugs that problem. Election Tribunal has to determine on the basis of qualification, disqualification given in Election Act as well as 62-63. Why I am saying is I have also appended parliamentary debate from Senate on the amendment. It's at page 28. They have admitted it's silent. Once they have admitted it's silent, the only requirement. What do you mean? It is admitted is silent. What does this mean? I mean, in parliamentary debate, which we can look into. So why don't you look at the constitution itself? I don't know. देखिए ये from Hebdo. Do you know what Hebdo was? My lord. One dictator. My lord. Throwing out everybody. My lord. Followed by another dictator. Throwing out everybody. Following by a third dictator. Throwing out everybody. Are you forgetting all these things? No, please, एक second ठहरिए ना. The constitution, original constitution did not have these D, E, F, G clauses. My lord. These are imposed by a dictator, correct or not correct? Correct. Why you gave it no importance? Either say we support dictatorships. Hang on, ऐसे नहीं होगा ना. We can, जरा बात तो सुन लेना. आइन का तकद्दुस उसी वक्त होगा जब हम उसका तकद्दुस मानेंगे. या हम कहते हैं हम बंदूक का तकद्दुस मानते हैं. जब पार्लियामेंट में जो 326 लोग बैठ करके कानून साजी कर रहे हैं, जो अब 326 से पहले कम होते थे, वो एक कानून साजी कर लें और उन्होंने ये किताब हमको बना के दे दी और फिर एक शख्स टहलते हुए आते हैं, वो कहते हैं बाहर जाए कॉन्स्टिट्यूशन मैंने एब्डो कर दिया. तमाम पाकिस्तान के सियासतदान इंक्लूडिंग my father was disqualified because he had the mistake of helping make Pakistan. But a general, you prevailed over everyone. You are not even attending the constitutional thing. You are supporting everything done by a military dictator, having precedence. Now show us this thing. Then the next dictator comes along and says, no, I introduce graduate condition. The third dictator comes along and says, no, I introduce Sadiq, Amin, righteous, profligate. अगर देखिए एक कॉन्सेप्ट है मुनाफिक का कॉन्सेप्ट. मुनाफिक काफिर से बुरा होता है मेरे हिसाब से. काफिर को तो पता नहीं रोशनी उस है नहीं. काफिर कुफर का मतलब है गलाफ. ठीक है, उसको पता नहीं. मुनाफिक को पता हो क्या करता है. अपने ऊपर क्यों नहीं कंडीशन डाल दी है कि आई विल नॉट बी नॉन प्रॉफिलिगेट अमीन वगैरह. ये चीजें पिक एंड चूज करना, किसी को उठाना, किसी को फिट करना, ये बातें. अब व्हाई यू नॉट अटेंडिंग द लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट? यू आर ट्रीटिंग दिस एज अ सिविल सूट. You are saying a disqualification by a military dictator, a rapist can contest elections, but a person who makes a mistake, उसमें ये भी लिखा है कि कितने तोले सोना आपके पास है. ठीक है, आपने 6 लिख दिया, मालूम आपके पास 8 थे, तो यू आर डिस्क्वालिफाइड. आप आज हमारे सामने खड़े हुए हैं, हम आपको होल्ड करते हैं कि बुरा ना माने कि यू आर अ प्रॉफिलिगेट, यू वेस्टेड द टाइम ऑफ द कोर्ट. कल आप इलेक्शन में तक नॉमिनेशन पेपर आएंगे, आप कहेंगे देखिए ये जजमेंट लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट, ही इज डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ टू बी अ प्रॉफिलिगेट, ही वेस्टेड द टाइम ऑफ द कोर्ट, यू आर डिस्क्वालिफाइड. So let's not forget small things. We start focusing on small things. Look at the larger picture. Look at the context in which these amendments are brought into the Constitution. Look at Article 225. उसको आपने totally नजरअंदाज कर दिया है. Except you're not even saying a word about Article 225. It says no court shall. वहाँ आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट नो कोर्ट में नहीं आएगा डेफिनेशन में, यहाँ कोर्ट में आ जाएगा. तो ये आप जरा टोटलिटी में बात कीजिए. Let me submit. I was referring to, if you look at the amendments, 62(1)(f) was amended in. First one, is it a good amendment? It was amended. I'm asking your opinion. I'm talking about 18th amendment. I'm asking your opinion. 85 not good amendment, but 62(1)(f) is good. I'm talking about 18th amendment. क्या उसको छोड़ दीजिए, अमेंडमेंट भी तो गन पॉइंट्स पे हुए हैं, क्या बातें कर रहे हैं. वो लोगों ने कहा कि चलिए आधी जमहूरियत आ जाए पूरी से तो बेहतर है. प्लीज आप देखिए ना, मिलिट्री डिक्टेटर्स के सामने आप लोग कोई बात ही नहीं करते हैं. आप सवाल का जवाब दें, खुद में फिर जो कहना चाहते कहें, जो सवाल का जवाब आपका लगे. I agree with you. I am against dictatorship. I am for the Constitution. Reflect this in your arguments. What I am submitting is
when they amended and added a law, court of law, declaration by court of law in 62, at the same time they added 10A. ये तो पार्लियामेंट ने किया, ये भी पार्लियामेंट ने किया 18th amendment में. 18th amendment is a validation. Please don't equate it with amendment thought out by the parliamentarians. जितनी भी आप उनको हकारत की नजर से देखेंगे वो हमारे elected representative होते हैं, ठीक है? उनकी एक cumulative wisdom है. Surely it prevails over the wisdom of a military dictator. My lord. So why are you disregarding the wisdom? Why is the constitution being just, if it's a dictator, we cannot touch it. ये नहीं करें ना, आप मजीद point argue करें. I am submitting my arguments on the basis अच्छा, of... next point बताएं, क्योंकि you're not making headway now. You stopped. My lord, my next point is that when they brought in amendment in section 232 of the Election Act, during the parliamentary debate, it was admitted that Article 62(1)(f) is silent regarding period of disqualification. I have appended a copy of Senate's proceedings, which says we don't need to. It's obvious it's silent. it's silent. Yes. Now my submission is, once they have admitted that it's silent, they have to bring in constitutional amendment. So let's put it another way. My lord. Suppose we say 232 is not good law. My lord. And we also hold that judgment of the Supreme Court is also not good law. My lord. Then there is no disqualification at all, not even for a day. My lord. Yes? Yes. Then they have to amend. So you say the wisdom of 5 gentlemen sitting in this courtroom overpowers the wisdom of 326 parliamentarians sitting on in the next building. For what reason? Give us a reason. Give us some logical reason. I mean, just because it said so. That's all. Parliament had the power to fix 5 years in Article 62(1)(f), बात ही समझ but they रहे did not. अच्छा, चले आगे बढ़े ना, थोड़ा डिबेट को आगे ले चलें. देखिए, अगर इंटेंशन होती लेजिस्लेचर की, वकील साहब, अगर लेजिस्लेचर की इंटेंशन होती कि कोई सजा होनी चाहिए, जैसे 63 में बताया गया कि अगर किसी भी ऑफेंस में कन्विक्शन हो, कन्विक्शन पूरी होने के, सेंटेंस पूरी होने के बाद 5 years और 3 मुख्तलिफ बताए, 5 years, 3 years, उन्होंने पीरियड बता दिया. तो क्या इनका इंटेंशन नहीं था कि यहाँ पे पीरियड ना बताने का? सिंपली इट इज If they had the number and the intention, they would have expressly mentioned it in 62(1)(f), like they did it. Why not? We should consider it as positive कि इसके कोई सजा ही नहीं है, तो कह दिया कि फलां शख्स झूठा है, बस that's all. या प्रिज्यूम किया जाए हर शख्स सच्चा है unless proved to the contrary. ये अल्फाज भी लिखे हैं, हर शख्स. क्यों प्रिज्यूम करें कि वो झूठा है जब तक वो साबित Constitution is silent about period of disqualification. Which constitutionally next point पे चले ना. You are repeating yourself now. So your second A argument, lot of people to be heard. my lord, Let second us not argument speed is it up, that please. only constitutional amendment would have done this. My lord, that is my submission, only constitutional We understood amendment. And I support this argument with this thing as well. In Article 62, they have given various period of disqualification, 3 years, 5 years, 4 years, depending on the gravity as Parliament thought at that time. Repeat yourself. Repeat yourself. I didn't understand. Article 63 has given 3 different periods of... So I can just pose you a question. If in Samiullah Baloch, I'm writing now the judgment of Samiullah Baloch, imagine it. And I say that 62(1)(f) does not prescribe the period of disqualification. However, I will see the other provisions of the Constitution and say that since for treason it's only 5 years disqualification, I think this is a lesser crime and I put 2 years. Suppose it would
be as valid a judgment as Samiullah Baloch. Correct? For no logical reasoning. It is what I decide. I have to base my decision, a constitutional interpretation on some logic. Either you should say, I would be wrong in saying 2 years because you just picked out a number from your head. It could be 3, it could be 4, it could be lifetime. Please address this query. But there could be only two possibilities. No, why not 2 years? I write Samiullah Baloch and say 2 years. It's not written there. Exactly. So it's all up to do with my mind. But it's Nothing to do with the constitution. It's not written otherwise as well. चलिए मगर ये आप इसको अटेंड नहीं करें ना इस If बात it's को. silent, that means Understood your point. until it's in field. चलिए अगला पॉइंट या फिर हम किसी और से पूछें. This larger bench can revisit its own judgment. This larger bench can revisit its own judgment. That's Reinterpret. Election Amendment Act 2023. Now my submission is if we are in 187, then I can object on the vires of Election Act 2023. If we are only in appeal, then we cannot argue on the vires of the Election Act. आप तो वैसे ही चैलेंज नहीं करते उसे. You have not challenged varies of 232. That's not the question. Of It's not the question. Varies of 232 is not. Nobody has challenged the varies in the High Court or in this court. My lord, it has been challenged in the High Court. I've given you the There has petition. not been decided yet. वो तो तुम्हारे सामने नहीं है. My submission is, if we, because my lords have combined all these appeals along with section 194(3) petition. So my understanding, the way I Your read the understanding should be found. The answer is in the order, the first order that we passed. Since election are scheduled for 8th of February, one returning officer will do one thing, another officer will do one thing. There should be clarity. It's as simple as that. Now, if you want utter total confusion in Pakistan, that every constituency, one returning officer is saying, I will follow 232. Another returning officer will say, I will follow Samiullah Baloch. So we have stated very clearly, we want clarity. One way or the other, the returning officer is not a competent lawyer as yourself. It's maybe a bureaucrat. So give him clarity. That's all we're doing. That's what I'm submitting before my lordship. While you are hearing this, you have also issued notices under section 27 or order 27A to all advocate general and attorney general. The world, to the whole of Pakistan, we issued notice. You might as well decide upon the vires of this thing. नहीं वो भी कर लेंगे. आप बता दें अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. That is my submission. कह रहे अनकॉन्स्टिट्यूशनल. मैं कहता हूँ इस unconstitutional. I rely on Mohammed judgment. एक बार बताएं दे कि आप कह रहे हैं कि ये क्लियर पार्लियामेंट ने खामोशी इख्तियार की 62 और F में कुछ बताया नहीं, उसको हमने इंटरप्रेट किया. अब हमारे बाद पार्लियामेंट ने इंटरप्रेट कर दिया. क्या पार्लियामेंट का विजडम हमसे ज्यादा है या कम है एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को एक्सप्लेन करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए? किसके इख्तियारात ज्यादा, ये बताएं. Parliament has to frame, my lord has to interpret. They have framed the law, they have framed the law, They had to interpret the constitutional provision. उन्होंने कह दिया कि ये हमारा विजडम था. They had to frame it under 238, 39. They had to bring in constitutional amendment. आप लिखा दे बास काकड़ की citation लिखा है 2012. ALD 2012 Supreme Court 923. And what paragraph are you relying for the Para 50. for declaring the law ultra vires? Declaring the law ultra vires. So लेजिस्लेटिव एंट्रीज के ऊपर वो केस है, उसके अंदर तो उन्होंने होल्ड किया है कि लेजिस्लेटिव एंट्रीज जो Thank you. Anything else? Huh? Sorry, we are giving you a tough time, but we want sometimes tough questions help us resolve my lord. our own difficult
difficulties we are having in understanding things. My lord, Thank you very much for giving patient attention. Nani, thank you very much. Who will next? Amicus को हम पूछ लें या आपका? नहीं, आपकी कैटेगरी में जो आप आ पोस्ट जाइए, कर रहे उस्मान साहब हैं आ जाइए, और सब्जवारी साहब कहाँ हैं? सब्जवारी साहब। सब्जवारी साहब पहले करेंगे या आप करेंगे? एक सेकंड, ही सीनियर, विल आस्क हिम फर्स्ट। सब्जवारी साहब, आप जो मजीद पॉइंट्स ऐड करना है तो आप कर दें। My Lord, I gratefully adopt the arguments of my friend, and my case is also. हाँ, बड़ा अच्छी तरह से उन्होंने आर्ग्यू किया। जी सर, जी, I owe an explanation, my Lord, clarification. थोड़ा सा माइक की तरफ आ जाए, इधर माइक। हाँ, While gratefully adopting his arguments, I want to offer an explanation, clarification, that in my case of Mr. Muhammad Kashif, that is, my Lord, CP number 2680 of 2021. I am questioning the order of the returning officer who found him disqualified because he had relied on a fake degree in past. The returning officer's verdict was set aside by the tribunal by an appropriate judgment. Dated 4 of May 2023 at page 9 of the paper book, my lord. Then a writ petition was moved, and in that writ petition, the order of the tribunal was set aside, and that of the returning officer was restored. Zawari Sahab, you support the lifetime disqualification? My lord, I am telling that what is the point involved in my case. In fact, सब्जारी साहब, जरा सा आपके लिए मैं वजाहत कर दूं और बाकी लोगों के लिए मैं वजाहत कर दूं। हम इंडिविजुअल केसेस 5 ईयर बैन है, नो बैन है, या समीउल्लाह बलूच लाइफ टाइम बैन है, तो अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस नेचुरली विल फॉलो जो भी डिसीजन होगा, बिकॉज वी आर द सुप्रीम कोर्ट एंड एवरीवन हैज टू फॉलो आवर डिसीजन। तो हम आपके इंडिविजुअल केस, आप बुरा ना माने, हम उसमें टच नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी और भी प्लीज हों, वो फिर अलग सुनेंगे जी। तो ठीक है जी, फिर तो अब हम सिर्फ वो आईनी नुक्ता और कानूनी नुक्ता देखना चाह रहे हैं। मेरे फादर दोस्त ने, तो आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं? उनको सपोर्ट करता हूँ। एक थोड़ी सी बात ही कहता हूँ जी जी, कि the original constitution framers could provide the time limit also in 62F. तो एफ था ही नहीं ओरिजिनल में। कर रहे हैं ना support 18th amendment से पहले they could do so amendment. As far as the amendment, your lordship were very rightly pointing out that was brought by a dictator, but then there were subsequent parliaments, and ये बात सही है आपकी, ये बात सही है। और फिर वो माय लॉर्ड जो आया है 62 में अमेंडमेंट किया है 2010 में, उसमें कंट्रेरी कोर्ट किया। ये बात आपकी सही है, बिल्कुल। दूसरी ये है कि ये जो इंटरप्रिटेशन हुई है, मेरे फादर दोस्त ने उस पर बहुत अच्छा एड्रेस किया जी, कि जो वो जजमेंट आई है, दैट इज जजमेंट लॉ। समी साहब के केस में जजमेंट लॉ, और जजमेंट लॉ जब आ गया तो वो उसको जब उसके कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट होंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से वो हो सकता है, इससे नहीं हो सकता। बाकी मेरी सबमिशन ये है जी कि जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं, जैसे मैं हुआ हूँ, जहांगीर तरीन साहब हैं या कोई दूसरे हैं, वो चूंकि विदाउट ट्रायल हुए हैं, विदाउट प्रॉपर इंक्वायरी हुए हैं, विदाउट एविडेंस हुए हैं। आपके क्लाइंट डिस्क्वालीफाई हुए हैं जी, उसके पेपर रिजेक्ट किए ना जी उन्होंने, लाइफ टाइम जी। नहीं, इस केस में एक इलेक्शन था जो देखिए, तो आप उनको फिर क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? खुर्रम रजा साहब को, खुर्रम रजा साहब को तो आप कह रहे हैं आपके क्लाइंट डिस्क्वालीफाई हुए हैं।
या आपका मुखालिफ डिस्क्वालीफाई? नहीं जी, मेरे क्लाइंट डिस्क्वालीफाई हुआ। आई एम कंफ्यूज देन व्हाई यू? मैं ये कहता हूँ ना जी कि वो जो पोजीशन है कि वो पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, जो 2 जजमेंट लाइफ टाइम को आप सपोर्ट करते हैं, आप कहते हैं कि अगर इंक्वायरी होती तो आपका क्लाइंट मैंने सर अर्ज कर दिया, जो अल्लाह दीनू केस है और जो केस है उसका सरदार, आप कह रहे हैं कि आप असूली मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं इवन दो आपका क्लाइंट डिस्क्वालीफाइड हुआ है। मैं समझ गया आपकी बात, ठीक, क्योंकि वो बेसिकली डिस्क्वालीफाइड नहीं है, ये है जी। चलिए, और दूसरी ये है जी कि ये जो है ना, इसमें जो चीजें जिक्र की गई हैं, एक बात आपसे पूछ रहे हैं, ये जो आप कहते हैं ना डिग्री जाली डिग्री थी, रिपीट ना कीजिए, पॉइंट बाय पॉइंट बताइए जी, जल्दी बताएं। माय लॉर्ड, आप उनके आर्गुमेंट्स अडॉप्ट कर रहे हैं या नहीं? माय लॉर्ड, पार्टली अडॉप्ट कर रहा हूं लेकिन मुकम्मल नहीं जी। मैं पहले अर्ज करूंगा डिक्लेरेशन के बारे में जी। माय लॉर्ड, नंबर बताएं केस का। मेरा नंबर है जी 984 और 2018। माय लॉर्ड, आपके मुखालिफ आप रिस्पोंडेंट है, अपेलेंट है? एपिलांट हूं माय लॉर्ड। अच्छा, उन्होंने क्या किया है जिसके खिलाफ आप आए हमारे पास? उन्होंने मैट्रिक अपने आप को डिक्लेयर किया 2018 के इलेक्शन में। अच्छा, तो आप डिग्री वाला केस पहले चलिए, अब आप लीगल कॉन्स्टिट्यूशन बात करें। 199 के हवाले से मैं अर्ज करूंगा, जो डिक्लेरेशन का क्वेश्चन है कि डिक्लेरेशन 199 के तहत ये मेन फीचर है आर्टिकल 199 का, विदाउट डिक्लेरेशन एंड डिक्लेयरिंग एनीथिंग सुप्रीम ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पास ही नहीं कर सकती। ये कायनी मिला फरमाइएगा 199 में मालूम जी। पहला माइलॉट सबसेक्शन सब क्लॉज 1 में पढ़ूंगा, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ए हाई कोर्ट में इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट नो अदर एडिक्वेट रेमेडी इज प्रोवाइडेड बाय लॉ। नाउ आई विल गो टू Roman 2, declaring that any act done or proceeding taken within the territorial jurisdiction of the court by a person performing function in connection with the affairs of the federation, a province or a local authority has been done or taken without lawful authority and of no legal effect. Secondly, my lord, अब सी जो बी का रोमन 2 मुलादा फरमाइए। इसे कहना है उस्मान साहब, ये डिक्लेयर कर देगा कि ये आपका नॉमिनेशन पेपर गलत है या आपकी डिक्लेरेशन गलत है ना? जी मालूम, इतनी हद तक ही कर सकते हैं ना डिक्लेयर? नहीं मालूम, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि एक तो मैंने एक एस्पेक्ट बताया, ये डिक्लेरेशन तो उसके लिए है कि एनी पर्सन परफॉर्मिंग फंक्शन इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द फेडरेशन, जी मालूम, सरकार के खिलाफ के लिए, आम आदमी के लिए नहीं। मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं पहला सवाल ये था मालूम का डिक्लेरेशन क्या 199 के लिए अगला मालूम देखिएगा, इसका रोमन 2 देखिएगा बी का जी। On application of any person made order requiring a person within the territorial jurisdiction of a court holding or purporting to hold office to show under what authority of law he claims to hold that office. ये भी declaration इसको subsequently होगी, वो भी जो वारंटों की jurisdiction है जनाब, ये तो हाई कोर्ट एक्सरसाइज कर सकता है ना। हाई कोर्ट मैं यही कर रहा हूँ, हाई कोर्ट को वारंट जब इशू करती है तो डिक्लेयर भी करती है साथ, सिर्फ ये नहीं कहती कि आप This is the original jurisdiction of the High Court under Article 199. Writ of co-warranto can be issued by the High Court. जी मालूम, This is the only declaratory power यही है। मालूम बिल्कुल ठीक है, यही पावर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी 184(3) में है। चलिए मान ले, आगे मैं अर्ज करता हूँ मालूम, इसको इस तरह देख लें, मान लेते हैं ये बात है, तो हाई कोर्ट के सामने कोई डिग्री होगी, कोई डिक्लेरेशन होगी, तो हाई कोर्ट का हाउ यू आर होल्डिंग द ऑफिस, मतलब यही मैं अर्ज कर रहा हूं, अगर उसके बाद लाजमी नहीं इलेक्शन लॉज के अलावा भी या इलेक्शन लॉज भी समझे, आगे बढ़िए, आगे जो देखिएगा, मैं दोबारा आऊंगा माय लॉर्ड, ए का सब जो क्लॉज रोमन 1 है माय लॉर्ड, ऑन एप्लीकेशन ऑफ रेगुलर पार्टी मेक एन ऑर्डर डायरेक्टिंग ए पर्सन परफॉर्मिंग विद इन द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट फंक्शंस इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ फेडरेशन, ए प्रोविंस और लोकल अथॉरिटी to refrain from doing anything he is not permitted by law to do or to do anything he is required by law to do without declaring that what is the function of the person who is acting under the federal law or the provincial law. ये declaration नहीं हो सकती, ये order नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि declaration inbuilt है इसमें,
और इसी तरह देखिएगा माय लॉर्ड बी का ये ऑर्डर्स चैलेंज होते हैं 199 में जो पर्सन परफॉर्मिंग फंक्शंस इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ फेडरेशन और प्रोविंसेस, उनके ऑर्डर जिसके अंदर कोई एडिक्वेट रिलीफ रेमेडी नहीं होती है वो रिट में डायरेक्ट आ जाते हैं। इसी तरह आप देखिएगा बी राइट ऑफ अपील दी हुई होती है तो पहले अपील में जाते हैं। बी का 1 देखिएगा माय लॉर्ड आप, इसमें प्राइवेट पर्संस की हेबियस कॉर्पस के हवाले से वो भी डिक्लेयर होगी कि दैट इज इलीगल। आप सबसे पहले 199 के ओपनिंग वर्ड्स पढ़ ले, व्हेन देयर इज नो रेमेडी। मानो बिल्कुल ठीक बात है। इलेक्शन लॉज में अब काइंडली सी मुलादा फरमाइएगा। बी ये जो सी है माय लॉर्ड, ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी एग्रीड पर्सन मेक एन ऑर्डर गिविंग सच डायरेक्शन टू एनी पर्सन और अथॉरिटी इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट। अब गुजारिश ये है कि ये डायरेक्शन भी विदाउट डिक्लेयरिंग कि ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आप करने में फेल हुए हैं। बताइए पॉइंट ये है माय लॉर्ड, आप हमें इसे पढ़वा रहे हैं। पॉइंट ये है कि डिक्लेरेशन के बगैर, मतलब डिक्लेरेशन दिए बगैर हाई कोर्ट 199 की पावर एक्सरसाइज नहीं करती। ठीक है, ओके। और इससे हमारे केस का क्या ताल्लुक हुआ? इसमें क्वेश्चन जनाब ये पूछा गया था कि क्या डिक्लेरेशन हाई कोर्ट प्लेनरी जुरिस्डिक्शन की कोर्ट के अलावा कोई दे सकता है या नहीं दे सकता? मेरी हम्बल सबमिशन ये है, ठीक है, दे सकता है। चले आगे बताएं, आगे बताएं। अगली बात जनाब देखिएगा कि सेक्शन जो आर्टिकल 62(1)(f है माय लॉर्ड, एक सवाल माय लॉर्ड ने ये पूछा था, दो में डिफरेंस क्या है 62 और 63? नहीं, मैं इधर यहाँ मैं खुरम साहब से डिसएग्री करूंगा माय लॉर्ड। अगर सब आर्टिकल 2 मुलाजा फरमाइएगा ना 62 का ही, उसमें क्वालिफिकेशन का नहीं, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन का जिक्र है। यानी डिस्क्वालिफिकेशन हो या क्वालिफिकेशन हो, उसका मकसद एक ही है, चाहे वो प्री इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन। आई पर्सनली एग्री विद यू। मतलब सब आर्टिकल 2 बड़ा बात है, ठीक है। हाँ, आगे बढ़े जी माय लॉर्ड। उसमें तो इंटरचेंजेबल है ना, जी इंटरचेंजेबल, क्योंकि सब आर्टिकल 2 जो है वो ही वाज़ेह तौर पर कह रहा है। सही है। अब माय लॉर्ड जहां तक ये बात है कि सेक्शन 9 की जो ओवरऑल जो जुरिस्डिक्शन मतलब कोर्ट्स एक्सरसाइज करती हैं, सेक्शन 42 में करती हैं, या कोई और लॉ भी है जिसके तहत वो डिक्लेरेशन की डिग्री ग्रांट कर सकती हैं। और मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि सेक्शन 9 ऑफ द सीपीसी जो है वो बेसिकली जुरिस्डिक्शन देता है कोर्ट्स को टू ट्राई ऑल काइंड ऑफ सिविल मैटर्स ऑफ सिविल नेचर माय लॉर्ड। और उसमें सेक्शन 42 एग्जॉस्टिव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि देयर आर सर्टेन डिक्लेरेशंस व्हिच आर नॉट प्रोवाइडेड इन सेक्शन 42, बट दैट मे बी a dispute between one party or another party, and that can be granted under section 9 of the CPC. So this argument is in my humble submission is not correct, that section 42 is an exhaustive provision, my lord. Now my lord, मैं अब आता हूँ 232 पे my lord. Honorable my lord ने पूछा था कि 62(1)(f) में जब डिक्लेरेशन दी जाएगी तो लॉ के तहत दी जाएगी, लेकिन मेरी हम्बल राय में जब भी 62(1)(f) की डिक्लेरेशन दी जाएगी तो कोर्ट किसी को ये डिक्लेयर करेगी कि ही इज नॉट सगेशियस, नॉट राइटियस और नॉन प्रॉफिलिगेट और नॉट ऑनेस्ट और नॉट अमीन। वो डिक्लेयर करेगी 62(1)(f) के तहत। ये नहीं होगा कि लॉ ने उसको इख्तियार दिया हो कि वो कोई ऑर्डर करे और वो ऑर्डर उस लॉ के तहत हो, डिक्लेरेशन इसी प्रोविजन के तहत होगी। इसलिए समीउल्लाह बलोच जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन पर बेस करती जजमेंट है, उसको जब तक रिविजिट ना किया जाए उस वक्त तक सेक्शन 232 जैसे 62(1)(f) जो है वो अमेंड नहीं संभव, वो उसी तरह रहेगा। आपके कहने का मकसद ये है कि जब तक कोर्ट से ये साबित ना हो, किसी कोर्ट से, कॉम्पिटेंट कोर्ट से, कि ये सादिक और अमीन नहीं है, उसके अलावा आप उसको ये नहीं कह सकते, आप उस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकते। कोई 63(1)(f) यही कह रहा है हमारा, कोर्ट की डिक्लेरेशन जरूरी है, बिल्कुल ठीक बात है। And what is the definition of Sadiq and Amin? Or what is the definition of Sadiq or Amin? इसमें एक चीज देखिएगा, ये जो सब कोई मर्डर करके आ जाए, कोई वो नहीं शुमार। क्लॉज 2 जो है ना मालूम, वो बहुत जरूरी है इसकी, क्योंकि इस क्लॉज में पैरा D एंड E जो हैं उनको तो अप्लाई किया गया है मुस्लिम्स की हद तक, F को नॉन मुस्लिम पर भी अप्लाई कर दिया गया है। ये बहुत अहम बात है जो हमें, यानी एक नॉन मुस्लिम भी ही इज बाउंड टू बी सगेशियस, राइटियस, नॉन प्रॉफिलिगेट, ऑनेस्ट एंड अमीन। इट मीन्स कि अमीन का जो लफ्ज है इसका वो मीनिंग नहीं लेना चाहिए जो इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में है।
अदरवाइज ये इसकी क्या मीनिंग है? मतलब अमीन का जो डिक्शनरी मीनिंग है, ही शुड बी अमानतदार, बताइए ही शुड बी अमानतदार माय लॉर्ड, ही शुड बी अमानतदार। अमानतदार इस्लाम में अमानतदार का लफ्ज नहीं है, लेकिन ये क्योंकि मुसलमानों पर अप्लाई नहीं, ये भी मुसलमानों के अलावा नॉन मुस्लिम पर भी अप्लाई किया गया। कहते ये नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं ये कहता हूँ इसका मतलब ये है कि ये इसके वो मीनिंग नहीं है जो इस्लाम में लिए जा रहे हैं, ये वो डिक्शनरी मीनिंग है, ऑर्डिनरी डिक्शनरी मीनिंग्स जो अप्लाई होने चाहिए। अदरवाइज ये प्रोविजन मुसलमानों ये बाकी आइन तो अंग्रेजी में है, अंग्रेजी का उनको लफ्ज पता नहीं था कि अमीन के लिए क्या होगा। मेरी अमीन जो अगर हम आप कह रहे हैं डिक्शनरी मीनिंग में देखें तो अंग्रेजी की डिक्शनरी में उठाऊंगा, उसमें अमीन नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा जो तो मुझे लुगत देखना होगी उर्दू की, ठीक है या अरबी की आप चाहते हैं हम देखें? नहीं, उर्दू देखें या अरबी देखें, हमें नहीं पता, आपसे पूछ रहे हैं। मैं तो ये करूंगा अमीन अगर ओरिजिनली उर्दू का लफ्ज है तो फिर उर्दू की डिक्शनरी आप बताएं ना कौन सा लफ्ज है, ये अरबी का है उर्दू का है? मतलब ये तो उर्दू का लफ्ज है कि लेकिन इसका ओरिजिन जो है वो अरबी ही है, अरबी से ही इसको लिया गया, ओरिजिनली अरबी का लफ्ज, लेकिन अब अमीन उर्दू में भी इस्तेमाल हो रहा है। जनरल जिया को अमीन का अंग्रेजी लफ्ज पता नहीं था या उनके लॉ मिनिस्टर को नहीं पता था? नहीं, उनको पता होगा या नहीं पता होगा। नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ना, बाकी सब अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ये एक अमीन आर दिया। इसका मतलब है कि ये वही इस्लाम में जो इस्तेमाल होता है सादिक और अमीन, इसका मतलब वही है। नहीं, मतलब इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि फिर ये मुसलमानों पे अप्लाई नहीं हो सकता, उन्होंने नॉन मुस्लिम पे अप्लाई नहीं हो सकता। तो क्यों नॉन मुस्लिम भी तो सादिक और अमीन हो सकते हैं? हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन अगर इसकी इस्लामिक टर्मिनोलॉजी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, अगर डिक्शनरी मीनिंग हो फिर तो वो हो सकते हैं। अगर इस्लामिक टर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा फिर ये नॉन मुस्लिम पर अप्लाई नहीं हो ये जो ऐसी चीजें सिर्फ कंफ्यूजन के लिए डाली गई हैं, कोई वजह भी थी? नहीं, ये मैं तो कंफ्यूजन तो बहुत पैदा हुई है। इस्लाम और गैर इस्लाम में अमीन की डेफिनेशन डिफरेंट है। नहीं मालूम, सादिक और अमीन दोनों की, वो एक सच्चा आदमी हो, अमानतदार हो, वो कोई भी हो सकता है। गुड कैरेक्टर का आदमी तो नॉन मुस्लिम हो, मुस्लिम हो, गुड कैरेक्टर की तो एक डेफिनेशन। कौन डिटरमाइन करे कि फला शख्स का कैरेक्टर अच्छा है, फला शख्स अमीन है? मतलब ये फाइनली तो कोई खुदा ही डिटरमाइन कर सकता है, हम आप तो कर ही नहीं सकते। सही जवाब आपने दिया, बात है माशाल्लाह। अच्छा, एनीथिंग एल्स? आपने बहुत आज पॉइंट लिया। ये काइंडली देखिएगा, मैं कुछ अर्ज ये करना चाहूंगा माय लॉर्ड, 232 इस पे मेरी 232 पे बताइए आप। इस पे मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि क्योंकि 62(1)(f) जो है उसकी डिक्लेरेशन इन्हीं ग्राउंड्स पर होगी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड हैं, इसलिए समीउल लॉ जो कि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समझा जाना चाहिए जब तक वो रिविजिट नहीं होता। समझाना चाहिए, ये बताइए ना। एज अमेंडमेंट और इंटरप्रिटेशन। गुजारिश ये है जब कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट होगा तो उसकी इंटरप्रिटेशंस रेलेवेंट प्रोविजन का पार्ट एंड पार्सल कंसीडर होगी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया। आर्टिकल 189 और 190 की बात कर रहे हैं। 189 के तहत वही फॉलो किया जाएगा, ये मेरी हम्बल सबमिशन। सही है, सही है। अब ये ऑनर देखिएगा, अब मैं कुछ अर्ज करूंगा माय लॉर्ड इस हवाले से कि जो समीउल बलोच के बाद कुछ डेवलपमेंट्स हुई वो बहुत रेलिवेंट हैं इस बात को। मुझे एक सवाल का जवाब दे दें। द सेम लर्नेड ऑथर जज हैज आल्सो ऑथर्ड द जजमेंट इन फैसल वावडा केस, उसका जिक्र था लास्ट टाइम पे। बिल्कुल होता है। तो कैन यू रिकंसाइल द टू जजमेंट्स, यस और नो? यही मेरा पॉइंट है। मैं अब आज इस पॉइंट पे रहा हूं कि समीउल बलोच किन बिना पर रिविजिट हो सकता है। पहले तो फैसल वावडा के कैन यू रिकंसाइल देम और नॉट? नहीं हो सकता माय लॉर्ड, लेकिन उसकी नहीं हो सकता है। लेकिन उस वजह से क्या समीउल बलोच रिविजिट हो सकता है या नहीं हो सकता, ये सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। देखिए, रिकंसाइलेबल नहीं है, नहीं है रिकंसाइलेबल। एक और भी मैं अगर इसी प्रिंसिपल को ले लें तो इसका मतलब है सादिक और अमीन अगर आज नहीं है तो कल हो सकता है वापस सादिक और अमीन। जी बिल्कुल ठीक बात है। यानी एक व्यू अगर मेरी है आज और कल वो व्यू बदल जाती है, तो इसी तरह अगर मैं आज अमीन नहीं हूँ कल अमीन हो सकता हूँ, आज अमीन हूँ कल ठीक बात है। इससे मेरी तो यू आर बीइंग वेरी फेयर। आगे बढ़िए। अब जो ऑनर देखिएगा, PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 591 फैसल वावडा तो जनाब ने बिल्कुल नोट फरमा लिया। दोबारा आहिस्ता आहिस्ता बताएं। PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 591 के नाम बताएं जजमेंट है जी। अलादीनो भाइयों केस मालूम, ये रिव्यू जजमेंट है। ओरिजिनल जजमेंट जो अलादीनो भाइयों की है ना जो ऑनर, दैट इज 2013 SCMR 1655। दोबारा कहिए आहिस्ता आहिस्ता। 2013 SCMR 1655 जी। समीउल बलोच में अलादीनो भाइयों को कोर्ट किया गया
और ये कहा गया कि समीउल्लाह बलोच ये करेक्ट लॉ कहता क्या है अलादीन भाई? अलादीनो भाइयों का जो ओरिजिनल जजमेंट है ना, जो वो ये कहता है योर ऑनर, इसका 1657 है रेलेवेंट पेज माय लॉर्ड, 1657 क्या कहता है? इसमें दुआनी अर्ज करता हूं, उसमें उन्होंने कहा कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है अगर किसी ने जाली सनद जमा करवाई है, लाइफ टाइम। और रिव्यू क्या कहता है? रिव्यू में ये जजमेंट सेटिस्फाइड हो गया, सेटिस्फाइड हो गया ये रिव्यू में जो जजमेंट सेटिस्फाइड हुआ PLD 2020 सुप्रीम ग्राउंड पे कोर्ट 591, उन्होंने कहा जी ये दैट इज नॉट ए गुड लॉ, और जबकि समीउल्लाह बलोच में इस पर रिलाय किया गया, इसको कोट किया गया, पिटीशन अलाउड। जी मालूम ये रिव्यू भी 3 मेंबर जजमेंट थी। जी ये 3 मेंबर बेंच जजमेंट है, ये डिफरेंट बेंच है मालूम, ये मिस्टर जैसा उमर साहब बंदियाल साहब की जजमेंट है मालूम। तो ये एक और वेरिएशन यही मैं कर रहा हूँ मालूम कि अलादीनो भाइयों समीउल्लाह बलोच में एक्सट्रैक्ट कोट करके अप्रूव किया गया, और बाद में कौन सा वाला भाई हो? रिव्यू वाला भाई हो या मालूम ओरिजिनल अलादीनो भाइयों, क्योंकि 2018 की जजमेंट है ना समीउल्लाह बलोच, उसको रेफर किया, उसको रेफर करके उसको इंडोर्स किया गया, रिव्यू का जिक्र नहीं किया। नहीं रिव्यू तो अब पेंडिंग था, डिसाइड 2020 में हुआ, तो रिव्यू के बाद इसको फिर समीउल्लाह को नहीं उसमें कंसीडर किया? नहीं मालूम उसमें समीउल्लाह भी डिस्कस कर दिया गया, यही प्रॉब्लम है मालूम। आपने वेरी गुड वेरी गुड। देखिए आपकी तरह प्रिसाइज होना चाहिए, आज आप बहुत प्रिसाइज हैं। बल्कि ओवर स्पीड है आप। मौका नहीं इसके इसके बाद काइंडली देखिएगा मालूम कि dissatisfaction of the Supreme Court over the Samiullah Baloch is apparent due। आप कहाँ से पढ़ रहे हो? मतलब मैं तो मुकम्मल कर दी, मतलब यही मेरा पॉइंट था कि जब एक बेसिक लॉ जिसको आप रेफर कर रहे हैं, जजमेंट को रेफर कर रहे हैं, उसको आप सब्सिक्वेंटली रिव्यू कर लेते हैं, तो समीउल्लाह बलोच की फोर्स खुद आप कह रहे हैं कि खत्म हो रही है, वो फिर वो उसको आप उस तरह का एक अप्रूव लॉ नहीं बना के पेश कर रहे या उसको नहीं देख रहे जिसके मतलब आपने उसको रेफर किया हुआ है, उसको इंडोर्स किया हुआ है। अगली जो रोनम लहजा फरमाइएगा, जो मैं आपके कहने का मकसद ये समीउल्लाह बलोच प्रैक्टिकली आप समझें कि या इस जजमेंट के मुताबिक इट इज नो मोर इन फील्ड। माय लॉर्ड दैट इज इन फील्ड, but this is one of the consideration for reviewing of the judgment of the Samiullah Baloch. But the only difficulty is that these two judgments of the same learned author judge are 3-member bench judge. My lord. And Samiullah Baloch is a 5-member. My lord. So to that extent, it will prevail over the 3 judges, even though the authors are the same. My lord, ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि इसको इस बिना पे देखा जाएगा फोर्स क्या रही है समीउल्लाह बलोच की इस वक्त। आप काइंडली 2021 SCMR 988 देखिएगा योर ऑनर, 2021 SCMR 988 माय लॉर्ड। सॉरी दोबारा कहिए। 2021 SCMR 988 टाइटल 988। मैं जुबानी अर्ज कर देता हूँ माय लॉर्ड, इसका टाइटल मैं माय लॉर्ड सॉरी माय लॉर्ड। जी टाइटल में ढूंढ रहा था मालूम, सॉरी हम आपको बता देते हैं। सॉरी केसरानी केस है, केसरानी। अब इसका इसमें टाइटल है शमूना बादशाह केसरानी। जी मालूम, अब मालूम गुजारिश इस पे ये है कि इसमें भी समीउल्लाह बलोच में जो डायरेक्ट टाइप डिक्लेरेशन थी उससे इस तरह बचा गया मैं अर्ज करूंगा बचा गया कि ये कहा गया कि मिस डिक्लेरेशन मेलाफेडे नहीं थी। The same author. No, my lord, that is the judgment. लेकिन one of the member was same. जी, यानी मिस डिक्लेरेशन को मेलाफेडे नहीं डिक्लेयर किया गया, गो के मिस डिक्लेरेशन थी। अगर समीउल्लाह बलोच को मुकम्मल तौर पर और फुली फॉलो किया जाता तो फिर ये डिक्लेरेशन नहीं आ सकती। आप ये कह रहे हैं कि सक्सेसिव जजमेंट्स जो हैं जी, the court is trying to get away from some। my lord, and last judgment on this point, But the learned author is also member of the bench, my lord. though this judgment is by Sayyid Zahir Ali Akbar Naqvi. and the last judgment on this point, that is Supreme Court Bar Association versus Federation of Pakistan, PLD 2023, PLD 2023 Supreme Court, page 42। इसमें क्या हुआ है फैसला? इसमें माय लॉर्ड एक राह निकालने की कोशिश की गई। इसका शॉर्ट ऑर्डर जो है वो पेज 81 पे है माय लॉर्ड। एक सेकंड यार, क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट ये था, एक मिनट जरा आ जाए, जरा दे दें 23।
के तहत अगर कोई आदमी पार्टी लाइंस को वायलेट करके, डायरेक्शन को वायलेट करके वोट डाल देता है, तो क्या वो परमानेंटली डिस्क्वालीफाई होगा 63(1)(f) में या नहीं होगा? उसको शॉर्ट ऑर्डर में ऑनरेबल कोर्ट ने पेज 82 पे मालॉर्ड, पेज 82 पे डील किया मालॉर्ड। फिर मैं फाइनल ऑर्डर भी अर्ज करूंगा, वहां भी थोड़ा सा फर्क है। इसका सेकंड पार्ट दीजिए, पेज ये सेकंड एंड थर्ड पार्ट पे कंटिन्यू कर रही मालॉर्ड जजमेंट। ये 82 किस पेज, कौन से पार्ट में? ये पहला 82 पे है मालॉर्ड, जो रेलेवेंट है हमारे यहाँ किस पार्ट में? ये फरवरी के पार्ट में है। फरवरी पार्ट भी दे दो फरवरी इसका का पार्ट। इसमें दोनों जगह चल रहा है। इसमें डिसेंट भी है, मेजॉरिटी व्यू। मेजॉरिटी व्यू की बात करें। जी जी, मेजॉरिटी की व्यू की बात कर रहे हैं, माइनॉरिटी व्यू मेजॉरिटी व्यू की बात, जो कोर्ट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है मालॉर्ड जी, पेज 82 मालॉर्ड, पैरा 4 योर ऑनर। ये शॉर्ट ऑर्डर एक सेकंड आने दें। माय वाला। Today you're all charged up, very good, precise to the point. थैंक यू मालॉर्ड। Page 82, paragraph 4. जी मालॉर्ड, जी मैं जी मालॉर्ड जी। As regard the third question, it is our view that a declaration of defection in terms of Article 63A can be disqualification under Article 63 in terms of appropriate law made by Parliament under para P of Clause 1 thereof. While it is for the Parliament to enact such legislation, it may be such that it is high time that such a law is placed on the statute book. If such legislation is enacted, it should not amount to a mere slap on the wrist, but must be robust and proportionate response to the evil that is designed to thwart and eradicate. The question stand answered accordingly. अब इसको हमारे फाइनली जहाँ डिसाइड किया गया वो काइंडली मुलाजा फरमाइएगा मालूम। 63 वाली बात है। अगर 63 की बात हो रही है, 62 नहीं, फाइनल में 62 आ गया मालूम। डिस्क्वालिफिकेशन क्या बनी इसमें? मालूम इसमें डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? इसमें कुछ नहीं थी। सॉरी, इसमें मालूम ये इसी के आखिर में है मालूम। सॉरी, मैं गलती से कह गया था। ये इसी की जो है ना, इसी पार्ट के फरवरी के पार्ट में पेज मैं मालूम। अरे आप रिलैक्स करें, डोंट बी सो रश्ड मालूम। थर्ड पार्ट में तो वो डिसेंटिंग ओपिनियन है, इसी में है मालूम। ये इसी में कब में है, सभी में होगा। 146 पेज मालूम। 117 पेज 146 मैं रीड मालूम। 146 पैरा 117 मालूम। लास्ट पैरा ऑफ जी मालूम। majority view. As regard the third question, it is dealt with in para 4 of the short order. It is true that it is at least arguable that a defector may come within the scope of Article 62(1)(f). The question is that if this is to be the case, what should be the punishment? That is the punishment period for disqualification. As noted above, if a member who cast a proscribed vote in a de-seated, he can seek re-election in the by-election. If he chooses to contest the same, he may do so as an independent or even on the ticket of those who sought, engineered, welcomed, brought about and or rewarded the defection. If he loses, then the ensuing humiliation is also a punishment of sorts, but for the defector and his puppeteers. However, the cyclical nature of the electoral process must be taken into consideration. To impose a lifetime ban is to remove the defector for all cycles to come. Since Article 63(1)(p) confers the necessary competence on Parliament, on reflection, it is our view that matter is best left to the legislature while keeping in mind what has been said in para 4. The question stand answered accordingly. तो इसमें भी ये बात नहीं कही गई कि समीउल अपलोज के तहत, क्योंकि प्राइमा फेसी तो 62(1)(f) अप्लाई हो रहा है। इधर तो दरवाजा खोल दिया लेजिस्लेशन के लिए, लेकिन 62(1)(f) का दरवाजा इस कोर्ट ने खोल दिया पार्लियामान के लिए। तो अब नहीं, जरा एक सेकंड ठहरिए ना। अब जो आपने जो जजमेंट साइट किया है ना, इसमें ये भी 5 मेंबर बेंच जजमेंट है, इवन दो इट्स मेजॉरिटी माइनॉरिटी, मगर इस 5 मेंबर बेंच ने पार्लियामान के लिए दरवाजा खोल दिया कि 62(1)(f) को आप अटेंड कर सकते हैं थ्रू लेजिस्लेशन।
आप समझे ना बात? ये तो आपका जो actually वो ये कह रहे हैं कि पहला मौकिफ जो था ना आपका था कि क्योंकि जजमेंट आ गया है तो लेजिस्लेशन के थ्रू नहीं हो सकता है, तो यहाँ भी तो एक तसादुम नहीं आ रहा है दोनों नहीं judgments ये में। ऐसे नहीं है, काइंडली देखिएगा, ऑनली हमें पढ़ना पड़ेगा। एक्चुअली वो कह रहे हैं कि अगर डिफेक्टर वाला है तो इसके लिए कानून होना चाहिए, तो 63(1)(p) में ले आए। लेके आ रहे हैं, यही मैं 1F के जिक्र करने के नहीं, वो खाली कहते हैं कि 62(1)(f) पे भी बॉर्डर करता है, लेकिन तरीका होगा कि 63(1)(p) में ले आए। यही मैं कर रहा हूँ, यही इसका रियल इसका मकसद था, बजाय इसके कि समीउल ब्लोच अप्लाई किया जाता 63(1)(p) में उसको लेके गए। इसी जजमेंट के पेज 186 पे आ जाए, 168 से निकले 69 168 पैराग्राफ 10 and 11 पढ़े तो 168 इसी बुक में। आप कंटिन्यू करें नेक्स्ट। इसी बुक में जी माय लॉर्ड, 168 में नहीं, 168 मान लो, पैराग्राफ 10 मान लो, 10 and 11 both 11। दोनों, पहले 10 पढ़े बेटे। There are a variety of reasons why members of parliament decide to cross the floor. Therefore, there are views for and against it. Sometimes they cross the floor according to their conscience and in the interest of the constituents, whereas there is also a general view that the defection is because of corrupt practices, lucrative incentives, moral turpitude, or for some other reasons. Article 62(1)(f) of the Constitution provides that a person shall not be qualified to be elected or chosen as a member of Majlis Shura unless he is sagacious, righteous, and non-profligate, honest, and mean. There being no declaration to the contrary by a court of law. The said provision of Constitution is in clear terms describe that only upon a declaration from a court of law someone can be considered as such. This court is, in cases of so and so, has held that an elected member can only be declared as no longer sagacious, righteous, non-profligate, honest, and mean after a declaration by a competent court of law in this regard. In order to further protect the fundamental right of the citizen, Article 10A, my lord, introduced by the Constitution through 18th Amendment, according to the said article, for the determination of civil rights and obligation or in any criminal charge against him, a person shall be entitled to a fair trial and due process. Declaring someone as disqualified for any period to become a member of the parliament is a penalty depriving him of his constitutional right without declaration. जी मालूम अगले बुक में चला गया मालूम, अगली किताब में आएगा। जी मालूम। मैं पढ़ देता हूँ। By competent court of law after adopting due process through fair trial, determining any right and obligation of person would be against his fundamental right guaranteed by the Constitution. In a democratic system, there is always a difference of opinion, and every member has a decision of right to dissent and debate in order to put a check upon the working and decision of the party and its head. Merely on the apprehension that a member has betrayed his party and thereby depriving him from his right of expressing views and the right of dissent will be against the basic concept of democracy enshrined in the Constitution. Thus, simply on the fundamental right of a member, without adopting due process and fair trial, he cannot be treated to be no longer as sagacious, righteous, non-profligate, honest, and mean. This will also amount to giving unbridled power to the PM, which will result in creating a culture of civil dictatorship. No member will then have a right to remove the PM, even if the latter himself remains to no longer as sagacious, righteous, non-profligate, honest, and mean, or if his policies are against the state, the Constitution, the interest of the constituents, the injunctions of Islam, or even contrary to the party manifesto. For these reasons, the Constitution makers intentionally did not include the word disqualification of a member for any period of time in 63A of the Constitution. May I read, my lord? Continue, my lord. Yes, we got it. So, my lord, एक सवाल मेरे जहन में शुरू में शायद याया साहब ने पूछ भी लिया था. What was the necessity of bringing two different articles in the Constitution? ये 62 and 63. ये 62 says कि a person shall not be qualified to be elected. और यहाँ 63 पे लिखते हैं a person shall be disqualified. What is the difference? इसको डील किया गया है, योर ऑनर, सब आर्टिकल 2 जो है ना 62 का, उसी में डील कर दिया गया मालूम पढ़ने जी. 62 का सब clause 2 है, the disqualification specified in D and E. So that is not only the qualification but also the disqualification. मैं दोबारा पढ़ता हूँ. The disqualification
disqualification specified in paragraph D and E shall not apply to person who is a non-Muslim, but such a person shall have good moral reputation. तो मकसद दोनों का एक है, एक एंट्री के वक्त देखा जा सकता है। हाँ, एक बात जो खुरम साहब फरमा रहे थे कि इसको दो तरीकों से डील किया जा सकता है, उसमें ये जरूर हो सकता है। बट आई टेंड टू एग्री विद यू कि मकसद दोनों का एक मकसद है। क्योंकि देखिए अब जैसे अब पहला वाला वो सिटीजनशिप वाली बात है ना, वो पहले वाले में उसको ही हैज टू बी अ सिटीजन, ठीक है। अब हो सकता है लोग फिर दूसरी नेशनलिटी ले लेते हैं, फिर वो 62 में नहीं फंसेगा, वो 63 में फंसेगा कि अब उसने दूसरी नेशनलिटी ले ली। था तो पाकिस्तानी नेशनलिटी, फिर उसने कहा चलो मैं अमेरिकन ले लेता हूँ, जो कि फिर वो उधर फंस जाएगा। तो मेरे ख्याल में इतना इस पे फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही डिस्क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन। What I wanted to say earlier was, उसको आपने एड्रेस नहीं किया। देखें 62(1)(f) में declaration is coming from another source, from another court. Constitution is recognizing that there is a declaration coming from some court. Once that declaration is there, then he's not sagacious and then he's disqualified. So Constitution is relying on a declaration coming from some source, some court of law. Now that declaration itself किसी केस को निकाल लें, नॉमिनेशन पेपर्स में होगी, वो किसी एक्ट के तहत है ना, उसकी मिस डिक्लेरेशन है, वो भी किसी एक्ट के तहत है। सो दैट actual declaration is arising out of some violation of some law. Now that declaration is then borrowed by the Constitution, and the Constitution says then you stand disqualified. Samullah Baloch says that once that declaration stands, you stand disqualified. Now there could be a law introduced by the Parliament saying that declaration of law, which is arising out of a violation of a law, is being given a period. That's 5 years. So that also sort of comes into Article 62(1)(f) with the declaration that such a declaration which is given under the law, it's not under the Constitution, under the law will have a time frame. That's 5 years. So for 5 years, so therefore one argument is that you don't require the amendment of the Constitution because the disqualification is inherently under a law, not under the Constitution. Hence, correction of the law or time frame given to a law would be read into that declaration, which is being borrowed by the Constitution in 62(1)(f). ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि 5 years could be easily brought into 62(1)(f) through that. अगर तो सिर्फ ये कहा गया हो ना कि इस शख्स के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए गए इस वजह से कि इसने अपनी डिग्री दे दी, यही डिक्लेरेशन है। देखिए ऑल ओवर इन ऑल द डिक्लेरेशंस इट सेज कि आपने मिस डिक्लेयर कर दिया है, आपने एसेट्स छुपा दिए है, दे आर एक्चुअली आइडेंटिफाइंग एन इवेंट एंड देन वी आर बिल्डिंग ऑन दैट इवेंट कि इसकी वजह से, क्योंकि इसने रिटर्न में अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं की, इसलिए ये अमीन नहीं है। ठीक, सो डिक्लेरेशन तो सिर्फ इस हद तक है कि आपकी नॉमिनेशन पेपर में ये चीज कम है, एफिडेविट में ये चीज कम है, आपकी एसेट्स में ये चीजें नहीं है। इट्स द इवेंट, द रेस्ट इज ऑल कंस्ट्रक्शन करके हम कह रहे हैं ना। सो डिक्लेरेशन तो सिर्फ इस हद तक है। और डिक्लेरेशन आप देखिए ना, कोई डिक्लेरेशन निकाल लें, वो डिक्लेरेशन किसी लॉ में है ना, वो कह रहा है कि जी आपका नॉमिनेशन पेपर इज नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज फ्रॉम द इलेक्शन एक्ट और द रोपा व्हाटएवर। तो डिक्लेरेशन जो कोर्ट दे रहा है वो लॉ में दे रहा है, तो फिर लॉ खुद कह रहा है कि ऐसी कोई भी डिक्लेरेशन जो लॉ में होगी वो 5 साल की होगी, तो फिर वो क्यों नहीं पढ़ी जा सकती? उसकी वजह ये है, कई जजमेंट्स ऐसी हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ऐसी हैं कि जिसमें ये कहा गया है कि किसी शख्स को 62(1)(f) के तहत डिस्क्वालीफाई किया। पनामा केस की जजमेंट में वादे तौर पर 62(1)(f) मेंशन करके डिस्क्वालीफाई किया गया। सिर्फ ये नहीं, हाँ वो बात बिल्कुल ठीक है। अगर वो वाली डिबेट अलग है, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। हमारे पास जो इशू है, इज इट फॉर ड्यूरेशन ऑफ दैट पार्लियामेंट, इज इट अ ड्यूरेशन ऑफ 5 years, इज इट अ लाइफ टाइम? वो बातें हम तो नहीं बैठ के देख रहे हैं अभी, हम तो सिर्फ ये पॉइंट देख रहे हैं क्योंकि इलेक्शन सर पे है और ये मैटर को रिजॉल्व करना है। तो अब आप दूसरों का अब खत्म हो गए तो दूसरों काफी लोग हैं। और 2 मिनट लूंगा। 63(1)(p) में वो कानून आ सकता है जो जनाब फरमा रहे हैं, 63(1)(p) में। लेकिन जहां तक 62(1)(f) का सवाल है, उसको बहरहाल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 3(1)(p) में आएगी। द क्वेश्चन इज कि जब आप कह रहे हैं दोनों को इंटरचेंजेबली आप पढ़ सकते हैं, तो फिर आपका आर्गुमेंट। अभी हमारे पास सिर्फ सवाल ये कि क्या लॉ में ये चीज आ सकती थी या आइन में अमेंडमेंट हो सकती थी? मैं तो ये समझता हूं आइन में अमेंडमेंट नहीं, तो वही देखना ना, अगर सपोज 25 साल जो आइन में डिस्क्वालिफिकेशन लिखी है, अगर उससे रिलेटेड होता तो फिर तो आइन में अमेंडमेंट आती। या आइन खुद लॉ की डिक्लेरेशन पे रिलाई कर रहा है, तो वो लॉ कहता है मेरी डिक्लेरेशन 5 साल की हुआ करेगी,
तो फिर क्यों सिर्फ अगर तो कोर्ट ने स्पेसिफिकली 62(1)(f) में किसी को डिस्क्वालीफाई किया ठीक है। फिर तो वो बात वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चाहिए, अदरवाइज जनरली उसको ठीक समझ गए, चलिए समझ गए। आखिरी बात एक बात इससे पहले देखें, अगर ये तो सिचुएशन उस वक्त आती है जब नॉमिनेशन पेपर सबमिट करते हैं, सपोज रिटर्निंग ऑफिसर ये कहता है कि आपने फला चीज नहीं जमा की, क्या ये इलेक्शन डिस्प्यूट नहीं है? और अगर इलेक्शन डिस्प्यूट है तो इलेक्शन लॉ तो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन कंप्लेंट फाइल करेगा उस शख्स के अगेंस्ट, केस चलेगा। तो इसका मतलब क्या ये नहीं हुआ कि रिटर्निंग ऑफिसर के पास ये पावर्स नहीं है कि डिक्लेयर करे कि somebody is disqualified for such a period? This declaration ये इलेक्शन डिस्प्यूट बन गया ना। बिल्कुल ठीक बात है। इस पे दो व्यूज हैं योर ऑनर इस वक्त भी ऑनरेबल सुप्रीम। डायरेक्टली वो कर सकते हैं क्या? मतलब वही मैं अर्ज करता हूँ माय लॉर्ड, दो व्यूज हैं ऑनरेबल। नॉमिनेशन पेपर गलत फाइल किया, ठीक है, ही गेट्स ट्रैप्ड अंडर 62(1)(f). अब मुद्दत पार्लियामान की 3 साल भी हो सकती है, एक सेकंड है जी, बाई इलेक्शन हो सकता है, 3 साल भी हो सकती है, या कोई आदमी मर जाए, उसने कहा चलो मैं दोबारा इलेक्शन लड़ लेता हूँ, तो उसकी सीट पे आ गया 1 साल बाद, तो वो आपका कहना ये कि ये 5 साल भी ज्यादा है? बिल्कुल, एक इलेक्शन एक नॉमिनेशन पेपर, वो चाहे किसी और नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट होगा, किसी और सीट पे जाके नॉमिनेशन पेपर जमा करवा दे, अगले दिन जमा करवा दे। अगर वो फिर किसी ने चैलेंज आप ना इस तरफ से चैलेंज हुआ है ना उस तरफ से चैलेंज हुआ है, वैसे पॉइंट आपका बहुत अच्छा है। मेरी हम्बल सबमिशन ये कि इस वजह से भी 332(2) जो है वो अल्ट्रा वायरस है। नहीं अल्ट्रा वायरस तो नहीं है, मगर आप कह रहे हैं कि वो इट्स ओनली फॉर वन टाइम नॉमिनेशन पेपर, इसलिए 5 साल भी नहीं लगाया जा सकता उस पे कदम। आप कहते हैं 5 साल भी नहीं, 5 साल भी नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं नॉमिनेशन पेपर टू नॉमिनेशन पेपर फॉर दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी। मतलब ये हुआ कि आप कहते हैं जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसका इख्तियार सिर्फ पेपर रिजेक्शन के हद तक है, नथिंग एल्स। बिल्कुल नहीं, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड एंड नोबल पॉइंट यू टेक। माय लॉर्ड, लास्ट माय सबमिशन माय लॉर्ड, चंद जजमेंट्स में अर्ज करूंगा जो कि समीउल्लाह बलोच के इफेक्ट को मजीद खत्म करती है माय लॉर्ड। पहली है PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 137। पहले साइट तो नहीं हुआ है? नहीं माय लॉर्ड, आई डोंट थिंक सो माय लॉर्ड जी। 137 इसमें क्या हुआ? 137 व्हाट्स हैपेंड इन दिस? इसमें माय लॉर्ड ये कहा गया कि डेक्लेरेशन बाय कोर्ट होनी चाहिए, प्लेनरी जुरिस्डिक्शन की कोर्ट। ये तो अभी ये दीजिए, लेकिन ये साइट नहीं हुई जजमेंट। नहीं ये नहीं साइट हुई है। ये कितने मेंबर बेंच है? सेकंड माय लॉर्ड, ये 1 2 3 नहीं, इसमें भी उम्र सब 137 सरदार यार मोहम्मद रिंद जी माय लॉर्ड, ये तो इधर ही पड़ी इलेक्शन ट्राइब्यूनल ये माय लॉर्ड 3 मेंबर बेंच जजमेंट है, but the same learned जी author। माय लॉर्ड। देन माय लॉर्ड एक का फैसला आता है, लाइफ टाइम बैन है। जी ये है लाइफ टाइम, लेकिन इस बात पे कि डेक्लेरेशन बाय द कोर्ट होनी चाहिए। अब अगली जजमेंट देखिएगा 2019। एक सेकंड। Disqualification under Article 62(1)(f) of the Constitution entails a lifetime bar eligibility as held by this court in Samiullah Baloch.
ये तो उसको फॉलो कर पैरा 4 है मालूम, पैरा 4 है 141 पेज पे मालूम। हाँ वो पढ़ें फिर। The impugned judgment of the High Court have applied the bar of Article 62(1)(f) of the Constitution upon the petitioner without giving a finding that his declaration of Sanad al-Shahadatul Alamiya in his nomination paper filed in the year 2008 was a dishonest and deceitful action to meet the condition of graduate qualification in order to become eligible for contesting the general election. Apart from lacking such finding, the discussion in the impugned judgment is at best based upon a presumption and not on any finding or deduction made on the basis of any material qualifying as evidence. In the circumstances, the presumption drawn by the impugned judgment is conjunctural and cannot be made the ground for disqualifying the petitioner forever for contesting for holding an office in the constituent legislature of the country, my lord. Now, my lord, there is another judgment, 2019. बताइए 2019 SCMR 1939, my lord. Page 1939, my lord. 1943 and 1948 पे, my lord, इसका 1943 पे, my lord, relevant citation, my lord, 1939. नहीं रेलिवेंट आप बता रहे थे। my lord, एक 1943 पे मुलाजा फरमाइएगा, पैरा नंबर 7, my lord. May I read, my lord, para 7? We noticed that the order of returning officer dated 6/4/13 is summary in nature. No evidence was recorded. कहाँ से पढ़ रहे हैं? Para number 7 है, my lord. 1943. Sorry, my lord, ये भी उसी पॉइंट को है कि ये RO is not a court. RO is not a court. Para number 7, my lord. We noticed that the order of returning officer dated 6/4/13 is summary in nature. No evidence was recorded in the said proceeding, nor does the order give any reason for disqualifying the respondent under Article 62(1)(f) of the Constitution. On the other hand, Learned Election Tribunal made a declaration against the respondent only under Article 63(1)(c) and none under Article 62 of the Constitution. In terms of the said law laid down by this court in judgment reported as so and so, the order dated 6/4/13 by the returning officer merged into the order of the Learned Election Tribunal dated 16/4/13. The disqualification imposed on the respondent by the returning officer under Article 62(1)(f) therefore did not survive. My lord, now the relevant इसमें एक minority view क्या था? Minority view भी बहुत relevant है, my lord. That is at page number 1945. पैराग्राफ 10 पढ़ लें। I think ये इशू अब हमारे पास आ गए। कॉपी लगी मॉडल में था। ये पढ़ें। I am of the view that serious constitutional issues. I am of the view that serious constitutional issues require to be addressed inter alia, whether the disqualification of the private respondent under clause D and F of subarticle 1 of Article 62 of the Constitution was passed by the court of law or otherwise, whether the disqualification of the private respondent, if any, would be permanent or otherwise in terms of the test laid down in Samuel Bloch case, whether the lack of bona fide on part of his petitioner in invoking the constitutional jurisdiction of High Court under Article 199 of the Constitution and having an alternate remedy under the election laws rendered the petition maintainable or otherwise, whether the disqualification of private respondent could be ignored by this court, keeping in view the law, dicta laid down in Sher Alam Khan and Raja Shaukat Aziz Bhatti case. Accordingly, for the reasons stated herein above, leave of this court be granted to consider and read the issue stated above. So we are lucky to have this. It wasn't a dissent. It was these questions. The learned single judge, the three-member bench said require consideration. जी मालूम, ये बिल्कुल ठीक बात। तो ये तो बात कब से चल रही है कि ये इशू आप फैसला कर लें। ये अब कब की बात है? 2019 की बात। 2019 की बात है। अगर 2019 अब हम 24 में आ गए 5 साल। ये अगर आप एक पैराग्राफ और पढ़ लें, ये 2019 SCMR पेज 1943 पैराग्राफ 9 में सभी लोग फिर डिस्कस किया।
Ji, my lord. Be that is may, in Samuel Bloch, we have held that disqualification of election candidate or a holder of elected office under 62(1)(f) of the Constitution comes into existence when he is declared by court of law to lack any of the qualities mentioned in clause F of Article 62(1)(f) of the Constitution. In the present case, the only declaration against the respondent under Article 62(1)(f) of the Constitution was given in summary proceeding by the returning officer on 6/4/2013. As already noted above, no evidence was recorded by the returning officer to sustain his finding, nor he recorded reason for invoking disqualification under Article 62(1)(f) of the Constitution. He is not a court of law, but a statutory forum of limited jurisdiction. Therefore, the condition that only a court of law can issue a declaration of disqualification under Article 62(1) of the Constitution. What I think the point that can be made is that this question that was raised by a bench has been agitating this court for a considerable period of time. My lord. Different voices, different judges are saying, My lord. like in this judgment also, let's resolve this once and for all. And so it's good that we are resolving it once and for all. मतलब मैं चंद जजमेंट में लिखवा देता हूँ, पर साइड बता देता हूँ, टाइम क्योंकि बहुत हो बता गया। दें। मालूम एक है मालूम 2019 SCMR 1684 जी, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये होल्ड किया कि सुप्रीम कोर्ट आज खुद डिक्लेयर कर सकती है किसी को भी दैट ही इज नॉट ए सगेशियस, ही इज नॉट अ मीन। नेम क्या है ऑफ योर पार्टीज? मैंने ये है निदा खोड़ो वर्सेस मौजम अली खान। निदा खोड़ो वर्सेस मौजम अली खान। Even without recording evidence. जी 1695 है मालूम इसका रेलेवेंट पेज 1695 पैरा नंबर 7 मालूम। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। मालूम इसके बाद है मालूम 2019 SCMR 137 मालूम। ये सारे मामला 2019 में हुए। 2019 SCMR पेज है मालूम 137। इसका जो रेलेवेंट पेज है 141 है मालूम। पेज 141 नहीं, साइटेशन का 137 है मालूम। 137 रेलेवेंट है पेज 139 पेज 141 मालूम जी। इसमें को वारंटो इशू हुई थी और वो ऑर्डर अपहोल्ड हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है मालूम। इसके बाद है मालूम इसमें क्या हुआ था? को वारंटो हाई कोर्ट से इशू हुई थी अगेंस्ट ए पर्सन हु वाज अ रिटर्न कैंडिडेट। उसके खिलाफ ये अपील जो थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से वो ऑर्डर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन पास इन को वारंटो वाज अपहेल्ड मालूम। नो मालूम PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 732 दैट इज फेमस हबीब अकरम केस मालूम। पेज 732 इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लार्जर बेंच ने ये फरमाया, ये लार्जर बेंच जजमेंट है मालूम। कितने जजेस? 732 सॉरी मालूम। नो मालूम ये नहीं वो है मालूम PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 732 ये वो नहीं सॉरी मैं इसको मैं बताता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन पिटीशन के ऑर्डर पर डिस्क्वालीफाई किया है फिर अपनी जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने लेवल पर। ये पेज ना 732 का जो रेलेवेंट पैरा है मालूम वो मैं अर्ज कर देता हूँ। ये 736 एंड 737 पेज पे मालूम। नहीं, हबीब अकरम नहीं है मालूम। ये हबीब अकरम नहीं, बीबी यास्मीन शाह जी सॉरी ये हबीब अकरम नहीं, वो हबीब और ये 3 मेंबर बेंच है जी मालूम। वो जो हबीब अकरम केस है मालूम दैट नहीं, एक सेकंड, बीबी यास्मीन शाह का केस है और इसमें रेलेवेंट पोर्शन क्या है? 337 एंड 336 एंड 337 मालूम। 732 पे थे आप। सॉरी 737 36 एंड 37 ये पैरा नंबर 14 है मालूम। इसमें क्या होल्ड हुआ है? From perusal of original record, it is clear that and obvious to us that respondent number 1, whose name is BP Yasmin Shah and whose father name is Nadra, database is Ali Hussain Jamali, and whose date of birth according to her NIC and Nadra record. ये डिस्क्वालिफिकेशन कितने दिन का था? ये डिस्क्वालिफिकेशन परमानेंट सुप्रीम कोर्ट ने की है मालूम। इसको ये जो ऑर्डर था नीचे इलेक्शन ट्रिब्यूनल इलेक्शन अथॉरिटी का उसको अपहोल्ड किया गया मालूम। नहीं, डिस्क्वालिफाइड पीरियड तो नहीं लिखा है, ये लिखा है 62(1)(f) में ही किया है इसको। पीरियड नहीं लिखा है, पीरियड नहीं लिखा लेकिन 62(1)(f) तो ये लाइफ टाइम नहीं है।
अब उस वक्त उस वक्त तो लाइफ टाइम था मालूम। जिस जो जजमेंट आई उस वक्त नहीं, इस जजमेंट में लाइफ टाइम का लफ्ज नहीं इस्तेमाल, इसमें सिर्फ 62(1)(f लिखा इसमें लिखा है डिस्क्वालीफाइड। जी मालूम। सो द इम्प्लीकेशन विल बी इट वाज डिस्क्वालिफिकेशन फॉर दैट नॉमिनेशन पेपर। मतलब इसमें क्योंकि 62(1)(f पे रिलाई किया गया, इस उसके तहत डिस्क्वालीफाई किया गया और उस वक्त के लॉ के मुताबिक पीरियड नहीं बताया, अलग पीरियड नहीं बताया। ठीक, आगे है जो पीरियड नॉट मेंशन। मालूम। ठीक, PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 578 मालूम। 2018 सुप्रीम कोर्ट पेज 578 मालूम। इसमें मालूम ECB का ऑर्डर था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर समरी प्रोसीडिंग में था, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अप होल्ड हुआ। इसका 589 पेज मालूम रेलिवेंट है। शौकत अजीज भट्टी। जी मालूम, पैरा नंबर 19 है मालूम। जी, इसमें क्या हुआ था? मालूम इसमें ECP ने एक आदमी को डिस्क्वालीफाई किया, वो रिट में गया, रिट जो है वो रिमांड हो गई कि आप दोबारा डिसाइड करें। उस रिमांड ऑर्डर के खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ECP आया और ECP की ये अपील, वो ऑर्डर अपील मंजूर होकर उसको परमानेंटली डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर किया गया। परमानेंटली? जी मालूम। इन व्यू ऑफ द फैक्ट सर्कमस्टेंसेस पेज 589 मालूम, पैरा नंबर 19। Here the matter was converted into suo motu proceedings under Article 184. ठीक, मालूम ये मैंने एक पेपर बुक तैयार की मालूम। आखिरी मेरी सबमिशन सिर्फ ये होगी कि क्योंकि पाकिस्तान में जो लॉ ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट है उसके बारे में कि कौन सा जजमेंट किन हालात में रिविजिट हो सकता है, रिव्यू हो सकता है, उस पे मैंने एक पेपर बुक तैयार की है जो ऑनर, जो बेसिकली मैं पढ़ूंगा नहीं मालूम, देख लीजिएगा। वैसे अगर कहीं तो मैं प्रिसाइजली अर्ज कर देता हूँ वो ग्राउंड्स क्या हैं जिन ग्राउंड्स के ऊपर किसी भी प्रेसिडेंट को रिविजिट किया जा सकता है। ये एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम द बुक द लॉ ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट मालूम। ये जो आपने केस साइट की पिछले ये 2018 सुप्रीम कोर्ट 578, इसमें ट्राइब्यूनल में नहीं गए थे बल्कि इलेक्शन कमीशन में गए थे। इलेक्शन कमीशन में गए थे, इलेक्शन कमीशन के बाद हाई कोर्ट में आए थे, हाई कोर्ट ने केस रिमांड किया। न ट्राइब्यूनल या RO नहीं था मालूम, कोर्ट नहीं। रिलेवेंट पोर्शन बता दें। इसमें कोई खास पेजेस हैं जो हम पढ़ें या सारा आप पढ़वाओगे हमसे? नहीं, मैं सिर्फ अर्ज कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक करके बता देता हूँ। इसमें पेजेस सिर्फ बता मैं पेजेस बता देता हूँ मालूम, मैंने ये नोट किए हुए हैं अपने पास। लॉ ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट एक किताब है गार्नर की, लेकिन इसमें बस पेज बता दें। मैं इसके जनाब पहला पेज है मालूम, पेज 3 मालूम देख लीजिएगा, नोट फॉर माले, बाकी बाद में पेज 3 बता। ये है अप्रूवल एक्सेप्टेंस एंड रिकॉग्निशन ऑफ ए जजमेंट। ये मैंने अर्ज किया कि कितनी अप्रूवल, पेजेस बता दें। पेज नंबर 3 मालूम, इस पेपर बुक। पेज नंबर 9 है मालूम, आउट क्रिटिसिज्म एंड डिसअप्रूवल। ठीक है। पेज नंबर 40 है मालूम, 40 पल्पेबली रॉन्ग डिसीजन। ये पढ़िए नहीं, बस ठीक बता दें, हम खुद पढ़ लेंगे। 9 48 मालूम, 48 देन 56 मालूम। आप वो सारे चैप्टर्स ही बता रहे हैं ना? जी, बेसिकली वो रेलेवेंट चैप्टर जो हैं वो मैंने अर्ज किया। 56 एंड देन पेज नंबर 13 पे भी मालूम ये इसका वो क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट है, पेज 13 भी रेलेवेंट है इसका। देन 18। So these are all the grounds to revisit and overrule जी, it. मेरी हम सबमिशन ये है कि सिर्फ ये है कि ये इम्प्रेशन जाता है और मीडिया पे इस पर रोज बात होती है कि जजेस की कॉम्पोजिशन चेंज होने के बाद फैसले तेज होते हैं। ये जजमेंट ऐसी है समीउल्लाह बलोच की जिसको रिविजिट होना चाहिए और इसके लिए जस्टिफाइबल ग्राउंड्स मौजूद हैं। और ये अगर ये लॉ ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट इस तरह डिक्लेयर किया जाए तो फिर ये मामला आइंदा के लिए खत्म हो सकते हैं। जो हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट जो है उसको गाइडलाइन दी जा सकती है कि ये पैरामीटर्स हैं जिसमें आपने जुडिशियल प्रेसिडेंट को चाहे कितने मेंबर जजमेंट हो उसको रिविजिट करना है और किन चीजों को आपने कंसीडर करना है। आपका कहना ये कि वो जो इंटरप्रिटेशन हुई है वो प्रॉपर नहीं हुई। मेरा कहना यह है कि वो प्रॉपर नहीं हुई और उसको रिविजिट करने के लिए ये ग्राउंड सफिशिएंट ग्राउंड हैं जिनको रिविजिट किया जा सकता है। प्रॉपर अगर अटेंड नहीं किया तो क्या वो जजमेंट पर इनक्योर
सिर्फ प्रॉपर अटेंड ना करना काफी नहीं है, उसके साथ पल्पेबली रॉन्ग डिसीजन होना, अप्रूवल ना होना उसी जजमेंट का सेम कोर्ट से, क्रिटिसिज्म आना फ्रॉम द कोर्ट एंड आउटसाइड द कोर्ट, लीगल स्कॉलर्स का, पार्लियामेंट की तरफ से डिसअप्रूवल आना, ये सारी चीजें कंसीडर होके और फिर स्टेट डिसाइसिस का प्रिंसिपल कहाँ उसकी वैल्यू, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन में स्टेट डिसाइसिस जो है वो इतना फोर्स नहीं रखता, स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन में स्टेट डिसाइसिस बहुत फोर्स रखता है, लेकिन जहां कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन होगी वहां उसका स्टेट डिसाइसिस का की इतनी ज्यादा फोर्स नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक मुश्किल काम है और सुप्रीम कोर्ट अपना अगर समझे कि हमसे रॉन्ग हुआ है उसको करेक्ट कर सकती है। स्टारी डिसाइसिस का प्रिंसिपल शायद हमने अभी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जिक्र किया है, पता नहीं आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा? मैंने 3 जजमेंट्स पढ़ी है, जो ऑनर की पढ़ी है, जज साहब की पढ़ी है एंड जस्टिस अभी नहीं आई, अभी जनाब की आपने पहली पढ़ी नहीं जनाब की दवाई नहीं, वैसे माशाल्लाह यू आर्ग्यूड वेरी वेल, आई एम ग्रेटफुल। Have you argued before a larger bench before of this strength or no? Or this is your first experience? 5 member bench के सामने आर्ग्यू किया। चले, okay. We appreciate your very precise, and I would request others also to be very focused and precise. So thank you for your. We will take a short break, and so Aji Bhandari sir, we will come back. If I can just make a request, I don't claim any preferential right of audience. We'll hear you. My lord, because I have to, for personal and professional reasons, I have to be back in Lahore, and the motorway closes because of the fog. That's also an issue. So if your lordship can, if you've heard all this, probably they have reduced your Mr. Khurram and Mr. Usman have reduced your work. So just more precise as you can be. I'm in the happy position of not representing anyone, just representing myself. So and you are in the unhappy position of not being paid. not being paid. That is true, my lord. Grateful. So we will return after a while. Hello. ठीक है। अब ये सब भी मौजूद है जी। So we'll hear. आगे resume. अच्छा करते हैं, we will hear you last. जी मैं आखिर में आऊँगा, but we resume at 2 or 2:15. नहीं, at least 2:15. It may be even longer. The Mikey can be heard first. जी, we hear Mr. Bhandari, then we'll hear Mr. Faisal Siddiqui, and then we'll hear you. And in the meantime, ये दे दीजिए इनको, पता नहीं इन्होंने देखा है. Another amicus has submitted a note. तो वो अगर किसी के पास नहीं पढ़ना चाहे वो पढ़ लें. Thank you everyone. एक छोटी सी सबमिशन मैं करना चाहता हूँ. There is another serious question of law in this case, and that is with regard to the applicability of Article 63(1)(h. मेरी अपील्स में जो 63(h) के जी कन्विक्शन अगर हो जाए और 2 साल की हो तो वो डिस्क्वालीफाई होता है जब तक वो 5 साल का टाइम लैप्स नहीं होता. तो जो इम्प्यून जजमेंट है मेरी अपील्स में उन्होंने उसको रिडंडेंट कर दिया है. उन्होंने ये कहा है कि इवन इफ व्हाट यू वांट, आई एम सेइंग कि वो जजमेंट को सेट असाइड कर दिया जाए. आप बेशक फैक्ट्स पे आई नो यू 63(1)(h) में आप चाहते क्या है कि 5 साल डिस्क्वालिफिकेशन हो, क्या हो? अलॉट वो तो लिखा हुआ है उसमें, मैं तो कुछ चाह ही नहीं रहा. मैं तो ये कह रहा हूँ कि आइन को फॉलो किया जाए, उस प्रोविजन को, क्योंकि जो लाइफ हुई है. बट विल हियर यू. आपकी लाइफ हुई है? सर लाइफ नहीं हुई. No, but we'll hear you. I mean, the batting order we've just explained. Thank you. First of all, I'm very grateful to your lordships and your ladyship for this honor of having me here in this capacity. Thank you for sparing time for us. My lord, it's a duty that one owes to the court, and I hope I'm able to discharge it to the standard that your lordships might expect of me. My lord, I'm guided as a preliminary point only by the order that the court associate very kindly sent me yesterday. I haven't read the pleadings. I don't have the file, so I'm not really sure what the precise contours of individual cases. Let us, for your benefit, my lord, there is judgment of Samiullah's case,
which interprets 62(1)(f) and disqualifies a person in violation of that provision for lifetime. Then Parliament has enacted legislation and brought an amendment in the Elections Act of 2017, 232, within bracket 2, saying that such a disqualification is of 5 years. Mr. Usman Karimuddin contended that disqualification can only be for the purposes of that nomination paper, and that will end because if the disqualification goes away in the next by-election or in the next general election. That's one argument. The other argument is that the 232(2) cannot be enacted in the light of Samiullah Baloch's judgment, and for that a constitutional amendment is required. And however, all are so far unanimous that we can revisit Samiullah Baloch if we don't find it to accord with the larger constitutional premises. Absolutely. This is and the only reason why this question has been agitating different benches of this court by different judges, but since 2019, but unfortunately it's not been resolved. So since elections are there and there are I don't know thousands of returning officers, one will reject the paper, one will accept it, one will follow 232(2), one will follow Samiullah Baloch. So just wanted to facilitate smooth election. Of course, other objections will be taken, but on this matter at least, okay, it's a one-time bar. Then he just has to count 5 years past, not 5 years past. Simple. So this is, we wanted your assistance on this. I bow to that. My Lord, I bow to that. This actually, your Lordship's order of 11th of December, when I read it, I was reminded of what Chief Justice Marshall confronted in Barbary versus Medicine. He too posed the question that anyone enforcing the law, when faced with two norms, one, the Constitution, and one, the law made under the Constitution, what norm is that authority or person or official required to give effect to? That's the question here also. That the RO, that's how I read your Lordship's order. The ROs have two norms before them, 232(2) and Samiullah Baloch. Which of these two norms is the higher norm which the ROs have to enforce? That's the first thing that my Lord Mike. I just want to add one thing. No one has attacked, at least so far, 232(2). You're surprised because we expected someone or the other to launch an attack on that. Nobody has attacked it, but you can canvass your proposition on that. My Lord, as I said, I'm in the happy position of not representing anybody, so I don't need to challenge that. But my sense, in my humble submission, that the question of whether Section 232(2) is a valid law will inevitably arise. Because if the question is framed in these terms that I've just set out, let's proceed. That there are two norms. Which of these two norms? Yes. What do you say? The question will arise, my Lord. The question. Yes, it is. We agree with you. So, my Lord, the way I see it, my Lord, the starting point, as I see it, is the sort of historical context for 62(1)(f). That I believe is important. My Lord, pre-18th Amendment, what happened was that pre-18th Amendment, it was settled, and there are judgments. Samiullah Baloch in paras 33 and 34 discusses those judgments, that 62(1)(f) entailed a lifetime disqualification. This was settled before the 18th Amendment. The 18th Amendment is dated 2010? Well, the 18th Amendment is April 2010. So this is the 18th Amendment. This is one important The only addition that was brought about by the 18th Amendment was by a court of law, if I recollect. Yes. Well, the pre-18th Amendment, the second important factor that your Lordships, in my humble opinion, ought to note, is that there were various provisions in Article 63 which imposed a disqualification but did not lay down any time frame for how long the disqualification would operate. Yes. My Lord, this is 63(1)(g), H, I, and J. Now what is the disqualification? My Lord, now there are different, and I'll come to them. So pre-18th Amendment,
there before the Parliament. Judgments, various judgments of the Supreme Court, and 62 1F and 63 in this form. In the 18th Amendment, my lord, for our purposes, Parliament did three things and did not do one thing. Parliament, number one, substituted Articles 62 and 63 in their entirety. So the entire Articles 62 and 63 were substituted, number one. Number two, and this is very important, 63, 1, G, H, I, and J had time limits inserted in them. And there were different time limits, ranging from 5 years to 2 years. G, for different, and that probably that gradation is justified based on the severity or egregiousness of the wrong that they entail. The third thing that the Parliament did was that in 62 1F, they inserted these words that my Lord the Chief Justice has just mentioned, there being no declaration to the contrary by a court of law. What do you understand by these words? Well, I'll come to that in a minute. The fourth thing which the Parliament did not do was insert a time limit in 62 1F. So the Parliament consciously inserted time limits in various provisions of 63(1), but did not do so for 62(1)(f). And the inference that one draws from this, and this as drawn by in various judgments of this court, for example, Shamroz Khan versus Muhammad Amin, PLD 1978, Supreme Court 89. PLD? 1978, Supreme Court 89. The relevant is at 95. Where the principle laid down, and it's very well settled, that if a law has been interpreted in a certain manner by the court, the Parliament then does not change it, but enacts another law or uses the same word in the same sense, then the presumption is that the Parliament wanted the same meaning to continue. In my humble submission, that principle will apply here. That there is a presumption, and it's only a presumption, that since the Parliament was aware that 62 1F had been held by this court to entail a lifetime ban, but it chose not to insert a time limit for the disqualification, the presumption is that the Parliament wanted that duration to continue, subject to the insertion that it has made. This lifetime ban was held by the courts when? Before the 18th Amendment or after the 18th Amendment? Before the 18th Amendment, and those judgments are noted in paras 3 and 34 of Samiullah Baloch. There is the 2007 judgment, there are various judgments from 2009-10. They are mentioned in Samiullah Baloch. And this is something that is discussed. And the point, and what is also important is that could it not be interpreted, you drawing one inference, what about another inference? The other inference is that 63 1GHIJ prescribed periods, and in this 62 1F period was not prescribed. So the period is, as Mr. Usman had mentioned, only for that particular nomination paper. Why can't we draw that inference? But because that is not what this court had held prior to the 18th Amendment. Where did it hold? It's starting from 2007. कोई case बताए ना? This is mentioned, my lord, this is it mentioned in Samiullah Baloch. For example, 2007 Supreme Court, this is what is quoted there. 2007 Supreme Court, PLD 2007 Supreme Court 369. Imtiaz Ahmad Lali versus Ghulam Muhammad Lali. This declaration part was inserted in 1985. Hello? ये जो 62 1F की अमेंडमेंट पहली दफा कब हुई है? 62 1F की तो अब वो पहले भी होती रही है, पहले भी होती रही है, बट ये जो डिक्लेरेशन वाला वो अब आया 18th अमेंडमेंट में आई है ना जी, ये 18th अमेंडमेंट 2010 April 2010। आप जजमेंट्स दे रहे हैं हमसे उससे पहले की। मैं ये कह रहा हूँ जी कि उस 18th अमेंडमेंट जब पार्लियामेंट एनैक्ट करने बैठी तो पार्लियामेंट इज प्रिज्यूम्ड टू नो द स्टेट ऑफ केस लॉ, दैट्स अ प्रिजम्पशन. They knew that 62 1F has been interpreted in this manner. They knew that there is a presumption.
They consciously made changes in various articles of 63, but did not make changes. Where are you getting this presumption from? Well, this is settled. Even judges don't know sometimes what the early judgments are, and the parliamentarians are expected to know what the judgments are. But your lordship is wearing all the laws of the country on the sleeves of your lordship's robes. Oh, That's the law. I don't profess that. That's the law. ये जरा क्लियर कर दें कि 2010 से पहले what was the language? 2010 से पहले 60. Because those judgments that you're relying on, उसमें life की बात. He is sagacious, righteous, and non-profligate and honest and mean. That's it. That's it. And this was interpreted to be a lifetime ban. This was interpreted to be a lifetime. देखिए एक चीज है ना. There's another. Khurram Saab has drawn a distinction between 62 and 63, and 62 is the entry gate according to him. So this entry gate does not open to you if you're not honest, sagacious, non-profligate, mean, etc. Right? Now, where is this entry gate may suddenly open because now you are honest, sagacious, non-profligate. I mean, so it's not a permanent shutting off date. This is again judge-made law. This is again judge-made law. It is, and your lordships are free to revisit it. And I will be submitting that there are aspects of Samiullah Baloch which need to be revisited. But my submission is that... Mr. Uzair, clear kar de. Samiullah Baloch proceeds on the assumption that there is a disqualification by a court, and unless the disqualification is set aside, it continues. Prior to this judgments thing, what was the rationale in those judgments for a lifetime ban? That simply because the constitution read one of them. Did not. हम आपके साथ पढ़ना चाहते हैं. If I can just answer this, that there was no time limit given in the constitution in contradistinction to some other. And where did they draw the disqualification at that time from? Because there was no declaration of any court of law. There was no declaration. So how would they? What was happening at that stage, my lord, was that even the ROs were rejecting papers, asking questions. ROs were in their summary inquiry. Mr. आप अपना point बताएं. अभी तो मैं सिर्फ आपको historical background दे रहा हूँ. My point, जी, my lord. किस तरह से देखते हैं कि 62(1)(a) को देखते हैं. There is a declaration he is not a citizen of Pakistan. जी. Thereafter he becomes a citizen of Pakistan. My lord. तो वो भी permanent disqualification as per Samiullah case. My lord, if I can, I was going to proceed step by step, but let me say this: the way I read Samiullah Baloch, I don't see it as laying down a permanent disqualification. It only lays down, in my humble reading, an indefinite disqualification, and that can come to an end. The problem with Samiullah Baloch is it doesn't discuss the mechanism for that, and I will be making submissions on that. So that's why I'm saying that for me, Samiullah Baloch, I can just state my view on this. Samiullah Baloch need not be overruled, but there are problems with it which can be fixed. I don't see it read as laying down a permanent disqualification, but as an indefinite disqualification, and that indefinite disqualification can come to an end. The problem is Samiullah Baloch doesn't deal with that mechanism. I will make some submissions on that, and those are for your lordship. This is a new novel point, my lord. But I will, because I'm here in a neutral capacity. Yes. I will also make submissions on what happens if your lordships choose to overrule Samiullah Baloch. My lord. Well, the point, the historical context, the other point is that subsequent to the 18th Amendment also, there have been various constitutional amendments. We have 25 or 26 now. And this, despite the fact that the court's unease with this lifetime ban was evident in 2018 and onwards, no constitutional amendment ever chose to deal with this issue. Even though this was something, the disqualification of politicians or those running for a parliamentary office is something that affected Parliament directly. But nonetheless, the Parliament chose not to deal with it. So, my lord, could it be because एक वो उन्होंने लैंग्वेज चेंज कर दी थी वो ओथ में, तो पूरा पाकिस्तान को बंद कर दिया,
तो हो सकता है उन्हें कहा इसको छोड़ ही दें. ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि लोग जो बोलते हैं ना, what word should be used for them who don't want to follow the legal or constitutional path but want to impose their will on the state. So, but the state is still cognizant of the fact that who will deal with these people. My lord, if one could go back in time, one could want to change a lot of things. वो as Ghalib said जी, वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता, वो we don't know कि क्या होता. We are stuck with the letter of the law, right? What as it is, and we have to deal with that. Whether that is how it came about. So my lord, हम आपसे सुनना चाहते हैं कि अब होगा तो कैसे होगा. My lord, yes, yes. Again, I mean, I don't think a lifetime ban ought to be there, frankly, and I don't think the way I read it, Samiullah Be there or should not be there? should not be there. It should not be there. But I have tried, and as will be evident from my submissions, to find a way out from on the basis of Samiullah Baloch, and I'll say that. My lord, and this fact that Parliament chose not to deal with this issue through the 18th Amendment is actually considered in Samiullah Baloch itself. Your Lordship may just note paras 17 and 23. Para 17 at 432 and para 23 at 436. And it becomes actually very clear from para 9 of Justice Azmat Saeed's separate note. Very clearly says that, well, this is what Parliament has done, and why are you asking us to change? And those of us, my lord, who knew Justice Azmat Saeed in his personal capacity knew that there is a touch of exasperation in what he's written in para 9. So this is the key. My lord, my submission is, what has Samiullah Baloch actually done? It has interpreted these words, and my lord, the Chief Justice asked this question, what do these words mean? There being no declaration to the contrary by a court of law. What Samiullah Baloch has done is that it has linked the disqualification to the declaration by the court, and extrapolated from that since the basis of the disqualification or lack of qualification is the declaration by the court, therefore it should be coterminous with the decree itself, the declaration by the court itself. So long as the decree continues, the judgment continues, the disqualification continues. So if there is some way to end the effect of the decree, the disqualification will also end. That's the logical consequence. Samiullah Baloch in para 35 alludes to this, touches upon this, but then doesn't really go on and explain this. So, my lord, so I will come back to this, but one point, as I said, your lordships are sitting in a larger bench. Your lordships can obviously revisit Samiullah Baloch. Should it be revisited? My lord, the argument for its overruling or revisiting it is weighty. I don't dispute that. But in my humble opinion, even without overruling Samiullah Baloch, a way out can be found. And why do I say that, my lord? Why do I say that Samiullah Baloch should not be overruled? My lord, the prime argument that I am aware of, and I heard bits and pieces during the live broadcast a day ago, was that 62.1F should be read along with 63.1H. And reading them, this seems to be the main argument. This argument was considered in Samiullah Baloch in great detail in paras 27 to 32, pages 438 to 442. And they said that it was held that these two are separate. Qualifications and disqualifications are separate, and we can't use them. An expression that I have used earlier also before, my lord, is that in my view, they are like Siamese twins. Siamese twins are joined at the hip. So they are one for many purposes, but actually they are two separate persons, two separate entities. So they are separate for some purposes and they are joined for some purposes. For example, your lordship, the Article 100 of the Constitution talks about the qualifications for the Attorney General. And those
have been interpreted, Article 100 has been interpreted to mean that only the qualifications given in Article 62 shall apply, or for the qualifications required of a judge of the Supreme Court in that case will apply, and not the disqualifications. Why not in Rafiq Tarad's case, PLD 1998, Lahore 461. PLD 1998, Lahore 461. It was a full bench decision of the Lahore High Court. Just note, I'm not. There the question was that Article 41 says the president has to have the qualifications for same qualifications as member of parliament. And the question was whether the disqualifications mentioned in Article 63 will also be applicable. And it was held by the full bench that because the word qualifications is used, only Article 62 will apply and Article 63 will not apply. So there is a conceptual difference between the two, but for certain matters, they have to be read together, but not always. So my lord, my submission is that this argument that 62(1)(f) should be read together with 63(1)(h) and draw its inspiration in terms of the duration from 63(1)(h) was considered and was not accepted. Since it relied on earlier judgments starting from the 1960s, hence, since it has been there for a long time, there are many precedents for it. Therefore, in my humble opinion, it should not be overruled. My lord, I just place 2-3 judgments on that before you. आप हमें अपना बता देना. जी, मैं तो अपना बता रहा हूँ. When you say it should not be overruled, we observe number of judgments have been cited, including Faisal Wawda, same learned judge, not following Samiullah Baloch. My lord, I will. When I come to this way out, I will rely on Faisal Wawda. I think it is consistent. It explains. How do you reconcile the two? My lord, they will be reconciled. They are not. Can you reconcile the two? My lord, I will make submission on that. I think. कर देना. मैं वो तो आखिरी पॉइंट. नहीं आखिरी नहीं, देखिए हमें थोड़ा सा स्पीड अप करें ना. पहले, my lord, वो फिर मैं अपने नोट्स के आखिरी पेज. नहीं आप आ जाएं. My lord, हमें और लोगों को भी सुनना है ना. नहीं मैं बिल्कुल जी, मुझे तो आप लाहौर नहीं जा सकेंगे. सर मैं तो मैं आज लाहौर ना गया तो जी मैं लाहौर शायद कभी भी नहीं जा सकूंगा. ये भी हो सकता है. So इसलिए मुझे प्लीज आज जाना. Let me try another way. Motorway closes at 3:30. Motorway closes at 3:30. चले जल्दी बताए ना. My lord, I'll finish in 20 minutes. चले. My lord, for me, the key to this issue, and I'm now sort of jumping to the last page of my argument. My lord, the key to this issue. अगर आपने लिखा हुआ है वो हम पढ़ लेंगे. My lord, वो मैंने अपने लिए अभी मैं आपको दे दूंगा. मैं एक आध दिन में आपको ये तो मैंने गाड़ी में कल टाइप किया जी, टाइम नहीं था मेरे पास. My lord, the key for me to resolving this issue really is in para 6 of Samiullah Baloch. जी पढ़े. A point which was put before the court, but then the court. तौबा कौन सा? हाँ वो डिस्कस किया, आगे जवाब नहीं उसका. नहीं है वो इसलिए कि उन्होंने कह दिया. And what they have said there, the reason they did not consider it, my lord, is also significant. He was, however, candid to accept, and the court is dealing with Sadar Aslam's submissions here. He was, however, candid to accept that except for submitting their affidavits in court, his clients had not made any expression of remorse, regret or repentance before the concerned authorities or the public. And the question arises, what would have happened if that had been done? The way out, as I see it, and which something Samiullah Baloch doesn't deal with, is exactly because of this, that if this is established, that there is genuine repentance, there is, and penance has been paid, then the effect of the declaration can come to an end. And then again we are reading words into the constitution. My lord, that is something, my lord, it's a question of interpretation. It is the question of interpretation. And my lord, I earlier posed a question. If I was the author of Imagine, it's not been written yet, Samiullah Baloch, and I'm hearing it for the first time, and I said it should be a 2-year ban. So it's entirely up to me what I do. I'm not saying that there should be a fixed plan. That's exactly what I'm saying. I'm just saying what is the test before me? It's not because Samiullah Baloch has held this. That's the end of story. No, there must be a logical reasoning behind it, reaching that conclusion. So I'm saying if I was the author, I say if that is 5 years, I do 5 years. Or I say that is much more serious, I do 2 years. So it's entirely my discretion.
unguided by any legal concept or constitution. I'm not in favor of that at all. I'm not asking you. advocating that. So it would be as valid a judgment as Samiullah Baloch. No, my lord, I'm not saying that. I am not saying that. I am not saying that the judges should have a carte blanche to write whatever they want. Whatever they write has Guiding to be principle बताइए ना हमें. So, The guiding Mr. principle- Uzair, your principle is that one principle or way out is that if there is a declaration, it can be washed away through penance and repentance immediately, whenever given. So if the declaration is given today, in 1 hour I submit an affidavit of repentance, the matter comes to an end, or is there a time frame? No, my lord. No, my lord. How will I that think work? as they say, my lord, the devil is always in the details. My lord, 62(1)(f) encapsulates 5 different concepts. Like, for example, there is a requirement that the candidate be non-profligate. Now, profligacy, the simple meaning is, spendthrift. You wasteful of resources. Yes. No. Now, that's something that's probably easier to Suppose fix. the declaration is that there was a misdeclaration in a form which has left the declaration, then there is no direct declaration in any case. We're assuming that the declaration is that you're not honest because you're... So next day he comes and says, I'm very sorry, this will never happen again, sir. I'll never misdeclare ever. And he's repented. What else would you want him to do? My lord, because the first, I don't agree with what your lordship has said in the first part of your statement. The fact that there is a form and there is something wrong with that is not enough. That is not enough to disqualify him. That's happening in all these cases. No. There is no declaration. The declaration is based on a construction. It says that the form is incorrect. The assets form is not incorrect. You've left out this paragraph. You've done this. That's all there is that they discover. And then they build it on that. They say, because this is omitted, you are not a mean. That's the declaration in every case. But we are, your lordships and your ladyship are here precisely to see whether that's right or not. No, so that's And I'm saying that's a separate. That's not. Are here to see, but to That's be not. assisted by you. Mr. Uzair, and that's a separate basket of questions here. Then whether at all in any of these cases so far till date, is there a declaration looking straight into your eyes saying you're not honest because of the following issue? No, it's not. Nobody's saying that. One is just building, and that's what Samiullah Baloch also says. You'll have to construe from the facts and you say that you're not honest. My lord, इसीलिए मैंने कहा था कि वो आप मुझे page 6 पे ले गए मेरे notes के. If I had gone through pages 2, 3 and 4, maybe I would have been able to make some submissions on that. My lord, I am very clear that merely because somebody finds that I haven't dotted all I's and crossed all T's in my nomination form, I am dishonest. I am not saying that is correct. That's wrong. That's wrong. Then in that case, Mr. Uzair, there is no declaration ever so far in any case. But the point is, what is the declaration to the contrary by a court of law that 62(1)(f) contemplates? Where does that come from? And that's, I will make some submissions on that. For me, that's a formal process that has to be followed. It's not something that the RO can do. It's not something that the election tribunal hearing appeals against acceptance and rejection of nomination papers. Or a constitutional court. Constitutional court can do it. There is your lordship's judgment in 2010. There could be mistakes made, but the question is that is not a mistake. That's a conscious judgment by my lord, and I rely on it. And that's absolutely correct. I'm not noting anything. My lord, so what I'm saying is, my lord, my submission was that for me the way out is provided by the logic, the rationale of Samiullah Baloch itself. Samiullah Baloch is deficient because it doesn't follow through with the consequences of its own logic. For example, so that's the problem. And if that gap can be filled, then there is no need to overrule Samiullah Baloch. Samiullah Baloch is a judgment of... On that point, that's why you want to take it forward. You said the Samiullah Baloch gives an answer in paragraph 6 that there should be repentance, but it doesn't talk about it. It touches upon it. And I asked you that how do we follow through? Then you say, no, there is no declaration. So please tell us, the declaration is just the way it is. When does the repentance kick in and how do you bring that in? There are two
stages. First, there will be a declaration by a court. There will be a declaration by the court, and that declaration would be for the purposes of 62(1)(f). The one problem with Samiullah Baloch is that it doesn't really deal with what court, what proceedings, what nature of dispute would lead to this declaration. Mr. Bhandari, in paragraph 36 of the Samiullah, there is a word declaratory judgment. I know. The declaratory judgment, what is the declaratory judgment? By the civil court or the high court or the Supreme Court? My lord, it is, and I heard submissions on that also, my own submission, and I'm guided by my lord's judgment in 2010 Lahore. This is not a declaration in terms of section 42 specific relief act. It's a constitutional declaration. It is not shackled by the constraints of section 42 specific relief act. It is, and this is not the first time that the constitution has provided for it. Kindly look at article How 181. to give the declaratory judgment unless you examine and cross-examine Yes, and yes. produce, allow to production of evidence? Absolutely. How you can reach to the declaration? That has to be done. It can't be done without that. लेकिन आप कहते हैं कि अगर वो deficiencies, if we give any detail of those deficiencies, वो पूरी कर ले तो फिर वो ठीक है लाइफ पे. नहीं, मैं तो कह रहा हूँ वो लाइफ बैन है ही नहीं. वो लाइफ बैन है ही नहीं, क्योंकि अगर आप रिपेंटेंस कर ले, अलाउ मी टू सबमिट माय लॉर्ड. और समीउल्लाह बलोच ने ये डिस्कस किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में और भी सिचुएशंस हैं जहां डिस्क्वालिफिकेशन कोर्ट की जजमेंट से फ्लो कर रही है, और कहा है कि जी वहां भी यही है कि जब तक वो कोर्ट की जजमेंट इफेक्टिव रहेगी तब तक डिस्क्वालिफिकेशन रहेगी. फॉर एग्जांपल 63(1)(a), 63(1)(b, तो 63 जब कोर्ट की डिक्लेरेशन सेक्शन 45 मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस का कहता है कि अगर कोई पहले डिक्लेयर हुआ है एज मेंटली डिसेबल्ड, अगर वो ठीक हो जाता है तो कोर्ट अपने ऑर्डर वापस ले सकती है, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो गई. सेक्शन 63(1)(b) अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट को डिस्क्वालीफाई करता है, बट सेक्शन 41 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एक्ट आगे बढ़े जी वो डिस्चार्ज का प्रोविजन देते हैं. बट आप क्या सर, इन रिस्पॉन्स टू माय लॉर्ड्स क्वेश्चन, काइंडली सी आर्टिकल 184(1) and 2. Article 184(1) says the Supreme Court shall, to the exclusion of every other court, have original jurisdiction. उसके लिए है ना declaratory judgment. It is with regard to the provinces and the federation. Yes, but kindly read 184(2). In exercise of the jurisdiction conferred on it by clause 1, the Supreme Court shall pronounce declaratory judgments only. So this is a declaration created by the Constitution. This is not subject to any law. No law is required, nor can any law change this. This is a declaratory relief, a remedy created by the Constitution itself. And by definition, my lord, the declaration envisaged by 62(1)(f) cannot be given under section 42 unless you expand section 42. For example, it says, but this declaratory judgment is only in the context of clause 1 of के लिए है, तो के लिए है. अगर आपका आर्ग्यूमेंट चले, हम आगे नहीं, एक सेकंड ठहरिए ना. आपने 184(2) का एग्जांपल दिया, तो आइन खुद तयन कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट डिक्लेरेटरी जजमेंट दे सकती है. जरा ठहरिए ना. 62(1)(f) में आइन ये नहीं कह रहा है. 62 में लिखा है कोर्ट ऑफ लॉ, या तो आप कहे वो इम्प्लाइड है सुप्रीम कोर्ट एक्टिंग अंडर 184. इधर लिखने में क्या दुश्वारी थी? मैं अर्ज कर देता हूँ. ये तो सारी चीजें मेरे अदालत ने की है ना, आइन ने तो नहीं की है. अग्री. लेट मी जस्ट एक्सप्लेन कि मैं क्या कह रहा हूँ. पहली बात मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि ये आर्ग्यू भी हुआ कि जी ये, और आपने भी सवाल पूछा कि ये क्या डिक्लेरेटरी जजमेंट है. मैं ये कह रहा हूँ कि जी ये इस जो डिक्लेरेटरी जजमेंट्स का कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये सेक्शन 42 वाला नहीं है. ठीक, तो ठीक, यहाँ भी लिख देते. नहीं सर, वो इसके अंदर है. मैं आप अर्ज कर देता हूँ. स्पेसिफिक है मिस्टर भंडारी. मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है, ये डिक्लेरेशन, ये सेक्शन 42 में दी भी नहीं जा सकती. आपकी अपनी जजमेंट है, वो मान ली बात. नेगेटिव, ये तो नेगेटिव डिक्लेरेशन है. There being no judgment to the contrary, so the declaratory judgment has to say that someone is not honest, someone is not. Where do you draw the strength from that? कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ऐसी डिक्लेरेशन दे सकते? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि ये पहली my point number 1 is that this is a unique kind of declaration which is not given in terms of section 42. मैं तो ये कह रहा हूँ, ये अगला सवाल आता है. एक एग्जांपल, अब आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ. एक केस है सिविल केस, ठीक है, या क्रिमिनल केस ले लीजिए. एक गवाह आकर के झूठ बोलता है, कोर्ट उसको परजुरी के तहत उसको कन्विक्ट कर देती है, परजुरी के तहत.
is he disqualified for? It's a declaration now. You are a perjurer. You have lied in court on oath. You can't possibly be honest. So he's not allowed to contest elections for life. इसका जवाब दे दें. My lord, मेरे ख्याल में तो he is not disqualified on that basis. तो फिर तो it will directly conflict. खत्म हो जाती बात. Because आप जब किसी को पर्जरी के देखिए तो डिक्लेरेशन हो गया ना, कोर्ट ने उसको कन्विक्ट भी कर दिया. तो मैं जवाब सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड भी कर दिया. चलिए मैं आपको जवाब देता हूँ. आर्टिकल 10 उसका जवाब है. वो कैसे? लेट मी एक्सप्लेन. आर्टिकल 10 says there will be due process and fair trial. An elementary principle of due process and fair trial is notice of the charge against you. Now, when somebody is being tried for perjury, is he under notice that he will also be disqualified on 62(1)(f)? Then that sort of kills the whole thing. So, आपके मुताबिक 62(1)(f) की declaration कहाँ से आ रही है पहले? मैं आपको just explain that. मैं वो कई स्टेजेस पे कई फॉरम्स पे आ सकती है. स्टेप नंबर 1 बाय प्रोसेस ऑफ एक्सक्लूजन चलते हैं. सबसे पहले आरओ के पास नॉमिनेशन पेपर्स जाएंगे. वो नहीं दे सकता. It's not a court of law. He has to be shown some declaration at that time. From some court of law. By some court of law, and that declaration has to be specific for the purposes of 62(1)(f). वो कहाँ से, मतलब give us an example. मैं चलता हूँ. हम स्टेप बाय स्टेप वो स्टेजेस के थ्रू जाएंगे, शायद मेरी बात क्लियर हो जाएगी. The fact के आरओ नहीं दे सकता has already been held by this court in Aladinos Bhaios case, PLD 2020, Supreme Court 591. अभी वो नोट किया था जी, ठीक है. नेक्स्ट स्टेज, आरओ ने फैसला किया, अब हम इलेक्शन अपील में चले गए. आर्ग्यूबली अब ये प्री इलेक्शन है. हम आरओ ने ये फैसला किया, इलेक्शन अपील में हम आ गए. अब इलेक्शन अपील अंडर सेक्शन 63 of the Elections Act, election tribunals comprise generally of sitting judges of the High Court. So they are judges, but then acting as persona designata. So arguably, if they have admitted facts before them, they have admissions, or they have undisputed facts before them, then they can make this declaration. At best would be regarding the fact that yes, there was a mistake in filling the form. That's the message. There can be something more than that. Something more than that. For example, an objection is filed that this gentleman has already been convicted for perjury. That's an objection taken before the election tribunal. So that is when the election tribunal, if it is a court of law, can arguably make that determination that whether this conviction for perjury actually attracts. नहीं, ऐसे नहीं हो सकता. या देखें, ये बात आपकी बिल्कुल आप कॉन्ट्रडिक्ट अपने आप को कर रहे हैं. या तो आप कहें कि जो परजुरी का डिक्लेरेशन आ गया, कन्विक्शन आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर लिया, इन दैट लाइन ऑफ रीजनिंग कि ये कन्विक्शन परजुरी का हो गया, फिर कोर्ट के पास कोई चारा नहीं, वो कहेगा तुम ये डिक्लेरेशन है, यूर आउट. फिर कोर्ट बैठ के करेगा क्या? या तो आप ये आर्ग्यूमेंट लीजिए, या आप उसके बरक्स आर्ग्यूमेंट लीजिए कि वो वाज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस इन अ पर्टिकुलर केस व्हिच विल हैव नो बेयरिंग विद रिगार्ड टू एन इलेक्शन मैटर. यू कांट हैव अ मिक्स एंड मैच. ऐसे अच्छा एक जज बैठ के कहेगा हाँ ये तो हो गया डिस्क्वालिफिकेशन, दूसरा जज कहेगा नहीं हुआ डिस्क्वालिफिकेशन. ये जो आपने सेकंड पॉइंट किया है, दैट इज एग्जैक्टली माय पॉइंट, कि जो कन्विक्शन है फॉर पर्जरी, दैट इटसेल्फ इज नॉट डिसाइसिव. वो तो कानून शहादत के नीचे भी डिसाइसिव नहीं है. आपका कहना है, फिर तो आप कहिए ना कि समीउल्लाह बलोच इज रॉन्ग. Samiullah Baloch doesn't deal with this issue. That's my point. The Samiullah Baloch doesn't deal with the issue of how, in what proceedings, by which forum will this declaration be given. That's correct. ना कह रहे हैं wrong है. मैं ये कह रहा हूँ it is deficient. नहीं देखें ना, that's why I'm saying it is deficient, because it does not deal with this critical issue. That creates a problem. Samiullah Baloch says that disqualification is for life because of this very declaration by a court of law, and yet it does not deal with the fact that where is this declaration actually coming from. Yes. So it is very important to understand, because various councils are given a different viewpoint on this. Is it that when the nomination papers are filed, the RO will sit there, but somebody is going to produce a declaration from a court saying that this person is not sagacious, or will the RO start determining that question? So if it is to come from outside, some other court, फिर किसी court की declaration ये specific होगी ना that this person is not honest. Now I don't know of any declaration that can be possible under 42 which would say that he's not honest. तो मुझे ये पहले तो ये this conundrum तो solve ही नहीं हो रहा ना कि declaration आएगी कहाँ से? Negative. 42 की declaration. अच्छा मैं एक और चीज कहता हूँ. मैं कहता हूँ
a declaration as envisaged under 62(1)(f) cannot be legally passed. Hang on. Now hear me out. First word in 62(1)(f) is it can never be passed. Now please chew over this concept. Sagacious. Which court of law can ever determine this? It cannot be passed. A declaration to the contrary. We are not the क्या कहते हैं जो Spanish Inquisition के जो courts से. No court, unless you tell me yes, a court can pass such a declaration of sagacity. Can a court pass a declaration of righteousness? Can a court pass a declaration of non-profligateness, honesty, and Ameen? You cannot pass these declarations. I gave you a tangible example, even that you can't handle. I said, what about perjury, conviction of perjury? Which court? You said a court of law, court of law. So I am now a civil judge and I say, you are not sagacious, Mr. Uzair Bhandari, because you misled me in that case. You cited a judgment of the High Court which was overruled by the Supreme Court. You are not an honest lawyer. Is that a declaration? So I am saying these are just words on a piece of paper which are utterly meaningless. What would you say to that? My lord, I'm just proposing this, not holding it, mind you. My lord, actually, if your lord, since I am in that happy position that I mentioned, I agree with your lordship. These are not enforceable standards. These are given in the constitution. The problem we're facing. So, as my lord, as a citizen and as somebody who knows something about politics and constitution, for me these are completely amorphous, subjective, vague concepts which are not judicially enforceable. But we have to give some meaning to them. It's a wish list. It's a wish list. It's a wish list. Mr. Uzair, we could go along with that. If your lordship says that, then that takes care of all the problems. Mr. Uzair, these are not enforceable standards. We could take this to be a wish list and this could be used by the electorate for whatever subjective analysis whenever they want to. But the point is we cannot attribute redundancy to the Constitution either. Yes. So that's the problem. We have to figure out what does this mean. So first of all, it is very clear to all of us now that there can be no declaration saying you're not sagacious. There can be. अब वो बताएं ना. मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ आप मुझे अगर सीक्वेंशियली चलने दें, that's how I have perceived things. आपको हमने एंगेज किया किसी ने कि यार ये मेरा मुखालिफ है, ठीक है, इसको डिस्क्वालीफाई करो. अब आप सूट बनाएंगे, क्या बनाएंगे जिसमें कहेंगे ये सजेशियस नहीं है, जरा बना दीजिए मुझे और प्रेयर मांग लीजिए उधर. मैं क्योंकि ये नेगेटिव डिक्लेरेशन है, ये कैसे मांगेंगे प्रेयर? मैं प्लेन ड्राफ्ट करना तो प्रॉब्लम नहीं है, उसको प्रूव करना मुश्किल है. नहीं बताए ना, मुझे ड्राफ्ट कर दे. मैं मुझसे तो ड्राफ्ट भी नहीं होगा. My lord, as I said, जब डोनाल्ड रम्सफेल्ड ने कहा था ना, we'll jump off that bridge when someone pays me for it, I'll think about it. Nobody has paid me to think about it. जुडिशियल मैकेनिज्म क्या होगा ये बताया ना. जी, मैं उसी पे आ रहा हूं. समीउल्ला केस में अगर आप पैरा 35 देखें, आखिरी 4 लाइनें लिखी हुई हैं. The judicial mechanism in Article 62(1)(f) of the Constitution grants a fair opportunity and adequate remedy for relief to a candidate under challenge to vindicate himself. What is the judicial mechanism? वो नहीं दिया समीउल्ला बलोच में. इसमें लिखा है, समीउल्ला से पढ़ रहा हूँ मैं. नहीं दिया. उन्होंने नहीं वो ये नहीं कह रहे नहीं दिया. वो कहते हैं कि बड़ा अच्छा जुडिशियल मैकेनिज्म दिया हुआ है इसके अंदर टू विंडिकेट द ऑनर ऑफ दैट पर्सन. यस. तो व्हाट इज द जुडिशियल मैकेनिज्म? वो मल्टीपल, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ जी, वो मल्टीपल मैकेनिज्म्स हैं. वो कैसे प्ले आउट करेंगे मैं वो बता रहा हूँ. पहली बात, जैसे मैंने कहा कि जी आप इलेक्शन प्रोसेस देख लेना जी, एंड टू एंड कहां पे ये चीज हो सकती है. आरओ के पास नहीं हो सकती. अगर कोई प्रायर डिक्लेरेशन नहीं है तो आरओ खुद ये डिक्लेरेशन कर रहे हैं. आप रिपीट कर रहे हैं कि हमें सिर्फ इतना बता दें, आरओ के पास भी पेश तो हो सकती है ना कोई डिक्लेरेशन. आप हमें बताएं डिक्लेरेशन आएगी कहां से? माय लॉर्ड, वो डिक्लेरेशन कहां से आएगी? आर्टिकल 199 में. 199 में, एक सेकेंड, 199 में you're only there to declare an act of a public functionary to be correct or incorrect or wrong, or right? How could you go ahead and declare a private person to be non-sagacious in 199? My lord, why can't I file a writ of quo warranto against somebody holding a public office that he is not entitled to? So he doesn't have the qualifications. Fine. चलो उसने कह दिया, हाई कोर्ट ने कहा कि आपके पास क्वालिफिकेशंस नहीं है, को वारंटो में कैन नॉट होल्ड दिस सीट. Does that mean he's not sagacious? No, but I can then, the High Court can grant that declaration. Where from? How?
साइन कहीं लिखा नहीं, उन्होंने तो सिर्फ सेट डिक्लेयर करना है कि ऑर्डर ठीक है गलत। नहीं, बट अगर उसमें डिटर्मिनेशन ये होती है कि वो इसलिए वो ऑनेस्ट नहीं है, आप ये बारीकी एवरी टाइम वी पास एन ऑर्डर इन को वारंटो वी मस्ट आल्सो गो अहेड एंड से दिस गाय इज नॉट ऑनेस्ट। मतलब आप को वारंटो में या किसी भी पिटीशन में, आपने को वारंटो कहा तो इसलिए मैं किसी भी पिटीशन में वही आप ग्रांट करते हैं जो रिलीफ में मांगा होता है। कुछ वोटो तो आपके पास 199 में पावर नहीं है। तो अगर कोई 199 वी गाइडेड बाय दिस ना, 199 में मुख्तलिफ चीजें सर्चुरारी है, मैंडेमस है, वगैरह वगैरह। पहले तो आप पब्लिक फंक्शनरीज के एक्ट्स को सेट असाइड कर रहे हैं, या ठीक है, that's about it. We just declare that this action of the government or this public authority is incorrect. Now we don't go ahead and say that this private respondent in this case, or maybe even that public functionary who was doing this, who's passed this act, is dishonest or not a mean. So where is it coming from? So समझ ये आ रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स में तो ये हो नहीं सकता, 42 में आप प्लेनरी कोर्ट से भी नहीं कर सकते। तो पहला सवाल तो ये है कि डिक्लेरेशन आएगी किधर से? माय लॉर्ड, मेरा ख्याल, मेरी सबमिशन ये है कि आप 199 में भी कर सकते हैं, आप कोर्ट्स ऑफ प्लेनरी जुरिस्डिक्शन, और अगर मुझे एक्सप्लेन करने दें तो ना भंडारी साहब, को वारंटों में कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यहीं पर ये इसे फर्दर क्लियर करने के लिए, लेकिन वो इन लाइन विद आर्टिकल 62 होनी चाहिए एज पर योर आर्गुमेंट्स माय लॉर्ड। जैसे सेल डेफिनेशन प्रीएम्पशन एक्ट में डिफरेंट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में डिफरेंट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिफरेंट। अब उसके अंदर जो भी डिक्री होगी वो फॉर स्पेसिफिक पर्पस जी जी जी। अब इसमें आर्टिकल 62 के तहत जब तक डिक्लेरेशन नहीं होगा, दैट विल नॉट बी इफेक्टिव। बिल्कुल ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। कहां से आएगी? Before the start of election, how a person can be declared that he is not entitled to contest election if even he was a public servant and there is a declaration of writ of quo warranto against him? How that declaration can be used? My lord, Article 62. देखिए, आप को वारंटो तो हर होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस के पास हो सकती है ना। जब पहले होल्ड कर लेगा, ये तो इलेक्शन, स्टार्ट ऑफ इलेक्शन है, he is going for इलेक्शंस के वारंटो किसी पार्लियामेंटेरियन के खिलाफ भी तो हो सकती है ना। अब होगा, अगर 62 में ही पब्लिक ऑफिस में आएगा तो रिमूवल होगी ना उसकी। तो ये एंटर करने के लिए वारंटों का प्रिंसिपल तो आपको पता है ना कि हाउ ही इज होल्डिंग द पब्लिक ऑफिस, ही शैल बी रिमूव्ड। मेरी एक But for that, he has to hold the public office. मेरी एक सबमिशन है, with all due respect, my lord, I am here as an amicus. Let me give my views. If your lordships don't want to accept it, right? But that's the best thing you said. My lord, I feel I'm being cross-examined as if I'm. No, apologies. I'm not a party. Relax. Totally agree with you. Totally agree. Clarity. Just for clarity. Probably turn around and say I want to withdraw my amicus brief. अच्छा चलिए, अब आपका पॉइंट, हम आपके अगला पॉइंट बताएं। नहीं, अभी तो ये खत्म नहीं हुआ जी। अब आप लिख लें, आप से शुरू करें जी। नहीं सर, मैं यही जहाँ से सिलसिला टूटा था वही से शुरू करूँगा। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, दिस इज द पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स। ठीक, अब मैं अब थर्ड स्टेज पे आ जाते हैं। मैं लेट मी गो एज पर द स्ट्रक्चर ऑफ माय ओन आर्ग्यूमेंट्स। सो माय लॉर्ड, आई से stage 2 was appellate tribunal against the RO, can't do it, most probably not a court of law. Third stage, where the order of the election tribunal hearing an appeal against the RO's order is challenged in writ petition. That's Article 199. My submission is it can be done by the High Court in that, and your lordship did that in Muhammad Jameel versus Amir Yar, PLD 2010, Lahore 583. Your lordship actually did that. Your lordship discussed 62(1)(f), rejected domination papers. That was precisely, the entire dispute was in the context of an election matter, somebody's eligibility to contest elections, somebody's qualifications, and the facts spoke for themselves, and your lordship has dealt with them in great detail there. I see no reason why
doing that, why exercising that jurisdiction, this unique constitutional declaration, and that's how your Lordship Justice Mansoor described this. This is a constitutional declaration, not a Section 42 declaration. Why it can't be granted in the exercise of Article 199? In my humble submission, it can be, and your Lordship did not actually grant that declaration, but could have done that. The facts actually justified that, the admitted facts. Well, then I come to the next point. Supposing I'm still at the pre-election stage. And here, quo warranto can come at any point in time, but I'll deal with it at the post-election stage. The pre-election stage, then, my lord, in my humble view, a declaratory suit before a civil court ought also be competent. Your Lordship, I know in the same case, Mohammed Jameel versus Amir Yar has held that no declaration can be granted to this effect. And that's consistent with the law that your Lordship laid down in Laila Qayyum case 2019. Sorry, I need to help. Don't mind my saying interjection. Well, again, we want to simplify things, not complicate things. What you are doing, with respect, we want the RO, he has to take a returning nomination paper. उसकी जिंदगी में आसान बनाना है, मुश्किल नहीं बनाना है, हमें क्लैरिटी लाना है. इतना कंफ्यूजन जो आप तो दिस इज मेकिंग इट मोर कंफ्यूजिंग. सिंपल सी बात है, कब वो नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट करे, कब वो उसको एक्सेप्ट करे. अगर कोर्ट में पहले वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है तो जिंदगी भर के लिए है या 5 साल के लिए, इस पे आप आ नहीं रहे हैं. आप कह रहे हैं इधर हो सकता है डिक्लेरेशन, उधर हो सकता है डिक्लेरेशन, तो आरओ को हम क्या लिख के बता के क्या उसको इंस्ट्रक्शन दे दें कि भाई ऐसे कर लेना काम. ये उसी से रेलिवेंट है, तो बिकॉज आपने आरओ को ये भी तो बताना है कि उसके सामने क्या और कहां से आएगा, तो उसने क्या करना है. एक ही जगह से आएगा, उसको कहते हैं नॉमिनेशन पेपर. नहीं, बट उसने अगर ये डिसीजन लेना है कि ये उसे 62(1)(f) लगाना है कि नहीं लगाना, तो जवाब देना इस बात. ये भी देखना है कि वो उसके सामने क्या मटेरियल आ रहा है. और मैं ये कह रहा हूँ रवि, आप क्या वो कोर्ट ऑफ लॉ बना दिया उसको उठा करके, उसको हजारों नॉमिनेशन पेपर जिनमें देखना. मैं तो नहीं कह रहा सर कि तो जरा सर आप हमें असिस्ट करें. मैं ये कह रहा हूँ कि आज एक आरोप के सामने कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन देखनी, कोर्ट ऑफ लॉ की, और मैं कह रहा हूँ कोर्ट ऑफ लॉ में हाई कोर्ट एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन अंडर 199 आएगा. ये मेरी समझ. तो वक्त आएगा जब इलेक्शन होंगे, एक शख्स एक पब्लिक ऑफिस होल्ड करेगा, फिर जाके फिर उसमें दूसरा क्वेश्चन ये आता है, जब वो एक शख्स पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है तो द कोर्ट विल डिस्क्वालीफाई. Once he was qualified, he held the office. Subsequently, the High Court can, according to the High Court, can disqualify. अब disqualification 63 में दिया, वहाँ में 62(1)(f) की वर्डिंग्स ही नहीं है. तो इसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन इस बात पे नहीं हो सकती. Sir, we had invited you to help clarify. Sorry, I'm becoming more confused. You are not taking any position. You're saying this भी हो सकता है, this भी हो सकता है, this भी हो सकता है. Let's go to the basics. जाएं कहाँ? Learned Council, let's go to the basics. करें ना उस पे. ये आर्टिकल 62 और 63 में हमें जरा बताएं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? Are they different? Are they intellect? आपके ख्याल में how do you see 62? What was the need of having a separate article 62? They could have easily had it in 63. Framers के ज़हन में क्या था? Possibly they could have had sort of one set of sort of conditions which covered both. They could have done that. They chose to do that because conceptually, and this is how it's been analyzed, they relate to two different things. Qualifications are positive attributes that some aspirant to an office must have. These are positive qualities that he or she must have. Disqualifications are attributes that he or she should not have. If those negative attributes are there, then they will take away his fitness or his or her fitness or competence to hold a particular office. Now they are linked, as I said, they are like Siamese twins. They are linked. But the reason they have been set out separately is that there are provisions, and I can point out two, for Article 41 and Article 100, which use the word qualified. They do not use the word disqualified. So
Article 41 is about the president. Article 100 is about the attorney general, and I believe the same provision will apply to the advocate general. So, if I can just finish this, so they deal with qualification only, and it has been held by courts that in order to determine whether such and such person can be the president of Pakistan or the attorney general of Pakistan, then only the contents of Article 62 will be looked at, because the word qualified is used in those articles and not Article 63. आप किसी बात को लेकर चलते हैं, वो मैंने आपको बताया, वो रफीक तारर्स केस एक मैंने आपको बताया। देखिए आप किसी बात को लेकर चलते हैं, सपोज एक शख्स क्वालिफाई कर जाता है, उस पे सब सुनने जरा, एक शख्स क्वालिफाई कर जाता है 62(1)(f) में वो क्लियर हो जाता है, साल बाद 2 साल बाद वो अमीन भी नहीं रहता, वो उस क्या कहते हैं इनके सगेजस में नहीं रहता, राइटियस भी नहीं होता। अब एक शख्स उसको निकाल, आपको ही जाता है कि हम इसे निकालें, तो इसको डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। हेलो, तो उसके खिलाफ रेट ऑफ को वारंटो फाइल होगी, 63 में आएंगे ना, वैसे आएंगे तो 199 में। डिस्क्वालिफिकेशन के लिए 63 आर्टिकल 63 दिया गया जी। अगर आप 63 पूरा पढ़ लें, वहाँ पे 62(1)(f) के वर्ड्स ही नहीं है, तो डिस्क्वालीफाई किस बात पे करेंगे? डिस्क्वालिफिकेशन की बात नहीं है सर, आप क्वालिफाई कर चुके हो, पीरियड खत्म हुआ नहीं, लेकिन बाद में खराब हो जाता है एक शख्स। सर ये तो इलेक्शन सेक्शन 156 इलेक्शन एक्ट भी देखें तो वो भी कहता है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस बिना पे इलेक्शंस को सेटिसाइड कर सकता है कि जो नॉमिनेशन थी वो इलेक्शन सेटिसाइड की बात नहीं हो रही है, उसके डिस्क्वालिफिकेशन की बात हो रही है। डिस्क्वालिफिकेशन की जितनी बातें हैं वो 63 में बताइए, लेकिन 63 में 162(1)(f) का एक लफ्ज भी नहीं है। नहीं, बट सर अगर उसके खिलाफ कैसे डिस्क्वालीफाई करो? अगर वो कोवरंटो है तो उसमें ये भी हो सकता है कि जी वो 62 में क्वालिफाइड नहीं था, इस बिना पे भी हो सकती है, कर गया वो इस बिना पे कोवरंटो उसके खिलाफ हो सकती है, और आपने होल्ड किया हुआ है मल्टीपल जजमेंट्स में ये चीज कि ये हो सकता है। जी भंडारी साहब, आई हैव नॉट रिटन अ वर्ड। If your lordship think I'm not being helpful, I will beg to be excused. देखिए हमने आपकी बात यहाँ तक नोट कर ली 184. If your lordship think I'm not helping, then I will beg to be excused. No, but I'm just saying कि we have to hear others also. So we have to be a little precise. No, if your precise करें ना। that I am not you are being Please continue your submission. My lord, I can only apologize and then No. But हम कह रहे हैं जरा पॉइंट, अगला पॉइंट बताएं ना। Please continue with your submission. मेरा मतलब ये जरा we have to move ahead. My lord, मैं उसी पे आ रहा हूँ। सवाल यही है जी कि ये ना बताएं सवाल, ये आप बताएं ना जवाब। मैं उसी पे कर रहा हूँ कि ये डिक्लेरेशन सवाल, या तो ये सवाल एड्रेस करने की जरूरत नहीं है कि डिक्लेरेशन कहाँ से आनी है, तो आई मूव ऑन। अगर तो ये सवाल है तो आई कैन एड्रेस इट। आप ये देख लें कि जी डिक्लेरेशन कहाँ से आनी है। आपने जो जिस लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट आपने तैयार किया है, प्लीज कंटिन्यू विद इट और प्लीज कैरी ऑन। Well, I'm grateful, my lord. I can conclude quickly if I can. My lord, just continuing with this point and with apologies to the Honorable Chief Justice, the declaration. We would love to. Let me clarify. We would love to hear you. My lord, this is a case we cannot afford the kind of leeway which we already grant. I understand. Because there's an election, there's a scheduled election program, और फिर हमें order लिखना भी होगा. My lord, absolutely. I'm trying to address a question that has been repeatedly raised, and I'll very quickly do that. Because this question has been raised, whether a declaration can be granted under Section 42 or not. My submission is that the declaration contemplated by 62(1)(f) cannot be granted under Section 62, but it can be granted by a civil court under Section 9 CPC, because the civil court is a court of plenary jurisdiction. It is not a Section 42 declaration, it is a constitutional declaration. And your lordship may just note, in Aladino Bhayo's case, the court said that this declaration can be granted by a court of plenary jurisdiction. I believe other case law also has also been cited on it. So that can be done, my lord. Then your lordship may note that there is case law, and I believe one counsel cited AIR 1967 Supreme Court on this. Actually, that judgment has been followed in Pakistan by the late Justice Sabiuddin in our Arif Majid Malik versus Board of Governors 2004 CLC 1029 to say that Section 42 is not exhaustive.
and other declarations can be granted in terms of Section 9 CPC. So if somebody has a problem, and we can leave the mechanics and proof to one side, if somebody has a problem against a prospective candidate, my humble submission is he or she, provided locus standi can be established, can go to the civil court and seek this declaration. That is so. So the argument is that there could be a Section 42 declaration. Not a Section 42, but you said it's not exhaustive, so it could be. It could be if your lordship should. Otherwise, it could be in terms of 62(1)(f) and read with Section 9 CPC. Yes. Still with the plenary court of yes, court of that could be. So, my lord. So this, for me, concludes the pre-election period. Then, in the post-election period, I say election tribunal is the court contemplated by 62(1) hearing an election petition. The election tribunal can do that. And the fact that it's called an election tribunal is not determinative. Your lordships in Sheikh Riazullah's case, PLD 2013 Supreme Court, held that the Federal Service Tribunal, though it is labeled a tribunal, is actually a court. So, and even in the Elections Act, the election tribunal has all the powers of a civil court, will follow CPC and Kanun-e-Shahadat order, record evidence. So now you explained the declaration kahan se aayegi. So yeah, and then my submission is that it can also be granted in a writ of quo warranto. And quo warranto, agar to, jaise, for example, my lord, quo warranto in Khaja Asif's case, 2018 SCMR 2128, and I'm citing this by way of example. That quo warranto was about Khaja Asif's eligibility to hold the office of a parliamentarian. So while adjudicating that kind of a quo warranto against that kind of a holder of public office, then this declaration can be made. But for example, if the quo warranto is against the chairperson of OGRA, then that quo warranto can be allowed, but this declaration can't be granted. So it would depend on the nature of the dispute and nature of the proceedings, nature of the relief. When quo warranto can be issued against a person if declaration is shown to the High Court. No, my lord. Still, the High Court can itself grant the declaration. On admitted facts, not on factual. No, but the quo warranto is by definition inquisitorial. The High Court can conduct. That is why quo warranto under Article 199(1)(b) is on the application of any person, not on the application of an aggrieved person. It is like laying information. The court can examine witnesses. It has. The High Court can examine. We're clear on the declaration coming from these sources. That's fine. Now comes the duration of it. My lord, I will come. My lord, your lordship may just look at para 35 of Samuel. Well, just one other point, which sort of in all this, my lord, sort of forwards and backwards, I sort of skipped. The other problem, I think conceptually this will help, and certainly this line of thinking helped my analysis. One deficiency in Samiullah Baloch, as I said, is it doesn't identify what it meant by what Justice Mother said, the judicial mechanism. Now it seems Samiullah Baloch said that any finding given in any civil proceedings will suffice. In my humble view, that's incorrect. Because a finding of dishonesty can be given even in criminal proceedings which may not attract 63(1)(d). For example, Section 489(f). Actually has dishonest issuance of about dishonest issuance of a check. Dishonesty is an ingredient of the offense, but it may not attract 63(1)(h). So this finding of dishonesty can be given even in criminal context. So there, Samiullah Baloch, in my humble opinion, is not correct. Number two, and this is more important, a finding of even on the civil side, a finding of dishonesty or profligacy or whatever can be given in any number of proceedings. For example, in a winding up petition, the company judge can say, or in a 290 petition of minority oppression petition, the company judge can say that such and such director was dishonest and he embezzled the funds of the company.
That's a finding of dishonesty. In a suit for specific performance, the court can hold that the plaintiff forged the agreement to sell. Bandari, we got the point. मतलब ये हमें समझ आ गई। आप अगला बात बताएं ना। इसको मैं आपने कहा बहुत तरीकों से हो सकता है ये। जी ये हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारे जो हैं ये 62(1)(f) की रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं करेंगे। अगर कोई और प्रोसीडिंग्स है कंपनी वो बता देना वो कौन सी चीज है 62(1)(f) की रिक्वायरमेंट्स मीट वो मैंने वो बता दिया। वो मेरे ख्याल में सूट फॉर डिक्लेरेशन भी हो सकता है। अगर किसी ने डायरेक्टर जिसको के खिलाफ कंपनी जज ने ये फाइंडिंग दी है उसको ये मंशा है कि उसको डिस्क्वालीफाई कराया जाए या तो फिर उसको 62(1)(f) की डिक्लेरेशन सिविल कोर्ट से लेनी पड़ेगी। सो इट्स अ टू टियर थिंग। दैट्स माय सबमिशन। चल ठीक हो गया। There's an exclusive category of declaration according to you that will attract 62(1)(f) declaration. जी Not all declaration. not all declaration। उस पे Now we come to the duration of it. Duration। सर इसमें again for me the key is para 35 of Samuel Baloch where the court held in 6th line, it may also be noted that the Constitution envisages other situations in which a permanent bar to the eligibility of a candidate for election is enforced, so long as the judgment that records or justifies the disability of the candidate remains in existence and occupies the field. This view is supported by Article 63(1)(a) and 63(1)(b) of the Constitution that provide disqualifications on account of judicial declaration regarding the mental unfitness or the undischarged insolvency of a candidate. These disabilities also continue so long as the adverse judgment is in the field. Now, this for me, I've already explained the point, but this is the context. That this for me is the main plank of reasoning. That's right. And you call it indefinite rather than life. That's why I'm saying it can turn. So, my lord, then the question then arises: how do you limit or make the declaration, which, as I said, it is given in terms of 62(1)(f)? How do you make that time bound or do away with it, my lord? As I said, the key to understanding that is para 6, which I read, my lord, the Chief Justice has alluded to that, the concept of repentance. But that will have, once you have that declaration against you in terms of 62(1)(f), then you need another declaration. In terms of 62(1)(f), this is also something that of repentance. That now you have reformed. You will file a suit for repentance. This is mentioned in this very देखिए ये हम सारी बातें हवा में कर रहे हैं ना, तो अब कोई सुन तो लेना। अभी सूट एक फाइल होगा, सर मुझे ये सजा मिल चुकी है, अब मैं रिपेंट करता हूँ, आप प्लीज डिक्लेयर कर दें मुझे कि मैं बड़ा अच्छा मुसलमान हूँ। अब ये सूट फाइल हो सकता है क्या? बहुत से केसेस में आपसे सवाल पूछना, स्पेसिफिक सवाल पूछना। यस, मेरे ख्याल में 62(1)(f) में यही सूट फाइल हो सकता है, यही हो सकता है मेरे ख्याल में 62(1)(f) में हो सकता है। 62(1)(f) doesn't confer jurisdiction on the plenary. नहीं, मगर आगे बढ़े ना हम। नहीं, वो तो सिर्फ एक आप एक नई jurisdiction का about कर रहे हैं, एक राइट दे रहा है। ये आपकी व्यू है, प्लीज मूव ऑन टू योर नेक्स्ट पॉइंट। My lord, and again in support of this, again there is this line. So you just want to note this, आप कह रहे हैं कि जो repentance वाला argument para 6 से है, that alone would not do, but a declaration to that effect will do. Yes. अच्छा ठीक हो गया। And then your lordships may note there are provisions, Article 66 to 69. Lifelong of declarations. My lord, a lifelong of declarations to contest elections. My lord, for me, really, the fault lies with the parliament. They should have done away with this. They have given this can of worms to your lordships. Please, So, let's not if they castigate other institutions. If they haven't sorted it out, let's not castigate other institutions. My lord, Let's focus. I have the right to criticize them. They are my representatives. They have not done what needed to be done. I have the right to criticize them. No, you don't. Article 66 to 69 of Qanun-e-Shahadat actually deal with character evidence. When good character is relevant, how can it be established, what is not admissible. So I'm sort of relying on that those provisions can be used, and then if you can go to the court and establish that, okay, you committed a wrong, you were whatever you were in the past, but now you've reformed. Now, have you come across any such repentance declaration which is reported? My lord, but there is none in the context of 62. We could come up with one. Well, you could, and as I said, my lord, that's how I see the Faisal Wagda case, actually.
That's I said. There was no court declaration There was of no court, repentance. but there was no court. But what had been? He simply just said, "I regret and I will not contest election this time." But your lordship felt that is enough repentance. Otherwise, what he had done fell At the end of the day, you are saying it's all to do with our feelings. No, my lord. Not what at you all. just said. No, not at all. Not at We all. felt. No, because your lordship accepted that as enough of a repentance. He person serves a full tenure. In the last days of his tenure, he says, "I repent." My lord, look, on the facts. Does he return his emoluments? Does he do any penance? My lord, We felt. That's the jurisprudence now. my lord, your lordship. The feelings of the Supreme Court on a particular moment in time. Your lordship So, said, laid down if anybody applying Wada's case could say that in this nomination papers that he rejected, I seriously repent and I will not contest these elections, and that's over, then he can contest the next elections. Well, it depends on whether Wada's case. that repentance, that penance is accepted by the court. Depends on That whether is- the judges that- are charitable or strict. No, my lord, it's more. In Wada's case, we were talking about bench number 1 of the Supreme Court. But I'm just posing constitutional questions. My lord, but in the way I see it, if you go. देखिए मेरे हिसाब से जो सबसे खतरनाक चीज होती है और जो तबाही की तरफ गुजारती है हमें, जब आप बहुत ज्यादा डिस्क्रेशन किसी को भी दे दें, मैं बिल्कुल चाहे जज को ज्यादा डिस्क्रेशन दे दें, चाहे ब्यूरोक्रेट को ज्यादा डिस्क्रेशन दे दें, जो मर्जी करो, जब कोई डिस्क्रेशन स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है ना, रीजन नहीं होता है, तो फिर तो मेरा हो सकता है हम दोनों मैं अपने तरीके से समझे बहुत सही है और मेरे साथी समझे बहुत गलत है, तो हम दोनों भी सही हो सकते हैं। तो अगर कोई प्रिंसिपल ना हो, कोई गाइडलाइंस ना हो, तो हम ये नहीं कि कोई बदनीयती से कर रहे हैं काम, मगर मेरे जहन में ये बात आ गई, उनके जहन में ये बात आ गई, स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन है ही नहीं। मैं तो ये नहीं कह रहा। एक सेकंड ठहर जाइए। और आप जो मैं आपसे जो एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहा था, जो आपने बिल्कुल उसको नजरअंदाज कर दी उन बातों को, वो मैं चाह रहा था कि आईनी आप मुझे गाइडेंस दें। आईनी आपने तो सिर्फ फोकस कर दिया समीउल्लाह बलोच पे। भाई आईन के मद्देनजर रखते हुए किसी ने अभी तक आर्टिकल 17 का तस्करा नहीं किया है, जो कि प्रिस्क्राइब करती है डिस्क्वालिफिकेशन की सूरत हाल में। किसी ने इस बात का तस्करा नहीं किया है कि जी दूसरी जगह ज्यादा है और झूठ बोलने के लिए लाइफ टाइम हो गया, पाकिस्तान के खिलाफ अब बगावत करनी है उसके लिए 5 साल हो गया। कोई लॉजिक भी तो होता है ना कोई चीज, या अंधाधुन लकीर की वो क्या कहते हैं, मक्खी पे मक्खी मारे जाए और कहें जी आपका मूड है, अगर आप समझते हैं फैसल वावडा साहब ने रिपेंटेंट हैं तो ठीक है छोड़ दीजिए, अगर आपके मूड में नहीं है तो मत छोड़िए, उसको लाइफ टाइम बैन कर दें। ये सॉरी टू से ये दिस डज नॉट मेक फॉर sustainable law. So please, we wanted a larger discretion. अभी ये मैंने बार बार भी जिक्र किया है, ये जो चीजें आई हैं आइन में, ये किस रास्ते से आई हैं? क्या लोगों ने, पार्लियामेंट ने बहुत सोच समझ के ये कानून साजी की? नहीं, उन पे थोपी गई ये चीजें। Not the 18th Amendment. वो उन्होंने सोच समझ के आप बात ही नहीं सुन रहे ना। 18th अमेंडमेंट से पहले आया 62(1)(f। उन्होंने ये 62(1)(f) तो उन्होंने डाला है, किसी में 62(1)(f) को सिर्फ उन्हें वो ट्यूनिंग की उसकी, निकाल दे। यार अब आप सुन लीजिए ना प्लीज। तो ये जबरन जो चीजें होती है ना, मेरी मर्जी वाली बात, एक शख्स की मर्जी पूरे पाकिस्तान पे हावी हो गई, उन्होंने फेट अकम्पली दे दी, कर लो या मैं बैठा रहूंगा 25 साल और। उन्होंने कहा अच्छा आप जाइए, हम कर देते हैं ये 8th अमेंडमेंट को और 18th अमेंडमेंट को, फिर वो आपका स्ट्रीट प्रोटेस्ट खतरा ये वो वगैरह आपने देख लिया, तबाही जो पाकिस्तान में हो चुकी। कोई भी रिपेंटेंट नहीं है और वो लोग फिर इलेक्शन लड़ रहे हैं। रिपेंटेंस हुई कोई? उन्होंने माफी मांगी किसी से? पूरे पाकिस्तान को वो बना लिया, होस्टेज बना लिया। ठीक है, बना लो पाकिस्तान को होस्टेज, आपकी मर्जी है। और हम इन चीजों पे खेल रहे हैं एक तशरीह पे, अब ब्रॉडर पिक्चर भी तो लगाए ना सामने। ये चीजें सारी आई हैं मार्शल लॉ डिक्टेटर्स के दौरान, आप कुछ जिक्र ही नहीं करते उन चीजों का। I don't know, we are sitting in a constitutional court, we talk about the rule of law, मगर वकील से के मुंह से डिक्टेटरशिप के खिलाफ बात नहीं आएगी।
ये क्या हो रहा है? मैंने तो ना डिक्टेटरशिप के हक में की है ना खिलाफ की है। प्लीज अलाउ मी टू से नहीं कर रहे खिलाफ। मैं जितना डिक्टेटर मैं 18th अमेंडमेंट वालों को उतना ही क्रिटिसाइज करता हूं। देखिए वो तो आसान है ना, वो सारे पार्लियामेंटेरियन उनको क्रिटिसाइज करते हैं। क्यों आसान है? मगर आईनी बात कीजिए। मैं सर जो बंदूक लेके बैठे हैं उसके साथ तो नहीं लड़ सकता ना। जिसको मैंने वोट दिया मैं उसको अकाउंटेबल करूंगा। उन्होंने क्यों नहीं ये इशू रिजॉल्व किया? उन्होंने क्यों नहीं 62 योर राइट टू आर्ग्यू टू हैव एन ओपिनियन एंड वी रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। प्लीज कैरी ऑन। लेट्स कंक्लूड। I am not saying कि ये एक शख्स की डिस्क्रेशन है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जी वो एक सूट के थ्रू ये हो। आप इस सजेशन को माने ना माने आपकी स्वागत। ठीक है, आप बढ़े ना आगे। वो सूट होगा, उसमें एविडेंस होगी। टच नहीं कर रहे हैं, ये मैं सिर्फ कह रहा सर मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं तो अभी दो मेरे आर्ग्यूमेंट के दो फ्लैग्स थे। एक तो ये कि जी समीउल्लाह बलोच के अंदर से ये रास्ता निकलता है। आप समझते हैं नहीं? मिस्टर ज़ैर, आपसे ये भी लेना चाह रहे हैं। We are Michaels and we are throwing this question that for a minute, if we imagine there is no Samiullah Baloch and the constitution is in front of you, how would you like to read 62(1)(f) as an unlimited provision or with some time frame in the totality of the constitutional scheme? मैं exactly उसी पे आने लगा। मैं ये कह रहा हूँ कि वो अगर मैं अपने तरीके से चलता तो चीजें दो प्रॉन्ग्स हैं मेरे आर्ग्यूमेंट के। एक तो ये कि जी आपको समीउल्लाह बलोच के अंदर से रास्ता मिलता है, वो मैंने अर्ज कर दी। वो सूट अगर होता है उसमें एविडेंस होती है, गुड कैरेक्टर बैड कैरेक्टर एस्टैब्लिश हो जाएगा। किसी की विम्स और डिस्क्रेशन की बात नहीं है, जुडिशियल डिटरमिनेशन। The second prong is if your lordship either decide to overrule Samiullah Baloch or, as your lordship said, your lordships are writing on a clean slate. Right. What would you do? Now, my lord, the principle there, one principle which I think is directly relevant, is that where the constitution provides a certain manner of doing certain things, and in a similar situation, it does not provide the manner as to how to do something, then the guidance provided in the first situation can be used for the second. So you're saying guidance from 63 could be taken to look at 62? But there is an issue with that, my lord. Now, and there are two cases that I cite. Why not? The first is the famous judges case, Al Jihad Trust versus Federation of Pakistan, PLD 1996, Supreme Court 324, at 531. Now, in this case, the issue was what is the time period within which judges should be appointed? And the constitution is silent on it. So what this honorable court did was that they said, we will take guidance from the time period given for the appointment of another constitutional office holder, the president, which is Article 41(5), and use that time period for the purpose of appointment of judges also. The same reasoning, my lord, was employed in a full bench case of the Lahore High Court in a judgment authored by Justice Mansoor Ali Shah. Why are you after me today? Why are you after me today? मैं तो आपके अपने दे रहा हूँ और फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। Lighter note. Just ease things a little. अच्छा बताएं। मतलब रब नवाज धदवाना versus मोहम्मद अकरम, PLD 2014, Lahore 591. At 622. Now here again the question was that there was no period given for the appointment of the Advocate General, and your lordships used the same principle, though Al Jihad Trust wasn't cited, but the same principle was used. The 30-day period given in Article 45(1) was used, and a 30-day period was prescribed. So your argument is that if in the constitution there is a bit of a void and there's no clarity regarding time frames, then whenever there are similar provisions of time frames that could be imported or read with those, and to harmonize the scheme of the constitution. If your lordships were to overrule Samiullah Baloch, or if your lordships were writing on a clean slate, there was no, then this could be done. But there is the problem with that is that the constitution in somewhat similar situations provides multiple guidelines. 63(1)(h) says 5 years, but then there is also provision for 3 years, 2 years. Right. So your lordships will have to see which is the closest. One has to probably rely on one time frame. But if, and I'll just sort of conclude. One question, fundamental right. The one fundamental right which I think would be involved would be Article 17. My lord is finished. If there are two interpretations of Article 17, my lord, will that the one favorable to the subject be preferred, or
an interpretation which is coming in another part of the Constitution, which is 62 and 63, which I assume has a lower status than the fundamental right chapter would prevail. Well, the fundamental rights will be given, provisions regarding fundamental If there are rights. two in conflict, which will prevail? Well, the one giving the fundamental right, there is no issue with that. Article 17 enables elections. Yes. And the only disqualification specified, mentioned therein is against Pakistan and all that. ठीक है? So, constitutional framers were very much aware. So, when 62(1)(f) was inserted in the Constitution, another amendment was not brought in to water down Article 17. Agreed, 17 was left as is. So, if we have to reconcile the two provisions, rather than going this way, we can simply say a right of this right is paramountcy because of Article 17, and there's no specific mention in the Constitution. And like my Lord said, if there was no Samiullah Baloch, how would you interpret it? We wanted to hear that view. That's the question I want. So one more question. I mean, now that you've read Samiullah with that kind of a Rhodes Scholar eye, I just want to know that does it talk about Article 17? Samiullah Baloch discusses this in detail. The strength of 17 and then looking at the Constitution. Yes. And there was all council had invoked the principle of the submissions are there, but is there a discussion of 17? So what do they deal with? How do they deal with it? Well, they said, this is not excessive. They said this is not an excessive. This last, Your Lordship may note, this is in the last 4 lines of para 35. Therefore, the permanent incapacity of a candidate for election under Article 62(1)(f) of the Constitution is not an arbitrary, excessive, or unreasonable curtailment of a fundamental right under Article 72. So they take care of that. And do they do a comparison on the thing that we just talked about, that there is a time frame in 63 but not there in 62? Yes. What do they say to that? My Lord, they did not accept that. They said that these are separate. These are separate. Your Lordship may just note the page numbers. Yes. There is extensive discussion on that. If Your Lordship, so the discussion comes to an end by saying that these are two separate, distinct provisions, and that's why we cannot overlap one. The discussion starts at para 27, right, at page 438, and it continues till page 442. And your opinion on it? Sorry? Whether they are the same, are they interlinked? For this purpose, I mean, the Siamese twin argument, are they twins here or are they separated? Here, I think they are separate. They are separate. So then this argument of Samiullah is correct in your view that we cannot import the concept of timelines in 63 into 62. Yes, even though earlier you said that one way of interpreting the Constitution holistically is to pick up a time frame from one, and you refer to 2 judgments also, and import it to the other. But now, what's your position? No, my lord, I am saying that in my view, the balance that Samiullah Baloch has drawn is correct. If Your Lordship, sitting in a larger bench, think that balance is not correct and should be done away, your opinion on it? My preferred view is that Samiullah Baloch, the balance is right. Samiullah Baloch, the fact that can we pick up a timeline from 63 and import it into 62? Only if Your Lordships do away with Samiullah Baloch. नहीं, my lord ने कहा ना कि imagine कि नहीं है वो. नहीं है तो फिर आप कर सकते हैं. फिर अगर कर सकते हैं तो आप तरजीह दे रहे हैं. आपकी राय सुनना चाह रहे हैं. आप 2 चीजें कह रहे हैं ना. आप कह रहे हैं कि you agree. We talk about what Mr. Uzair Bandhari has to say, that 62, 63 are 2 distinct provisions, or are they interchangeable? Number 1, for the purposes which are under discussion, and second, whether at all if there's a void, no time frame, and there's uncertainty attached to 62, could we bring in that certainty from 63 and put it in 62? What's your opinion on this? My lord, my own take, if I was writing the judgment, would have been, I would have done the same thing that Your Lordships did when in terms of Article 175A, send it back to the Parliament for them to sort this issue out. Parliament has enacted the law now. 5 years has been fixed. My lord, that law for me goes against what Samiullah Baloch has held. Suppose Samiullah law is suppose Samiullah is not there. My lord. And the Parliament clarifies through the enactment. Can Parliament do so? Parliament, for the purposes of Article 62, under Article 62, the Parliament has no power to legislate. It is there in 63(1)(p). Then Parliament can legislate there. 62(1)(f) says subject to law.
but for the laws of disqualifications. Mr. Uzair, on this ground, I mean, maybe you want to sort of comment on this, that one way of looking at it is that the declaration that's coming from wherever it's coming from a law, some violation of some law. So therefore, if you want to correct that, and that's an unlimited declaration, which is arising out of a law, not out of the Constitution, then the law has put a time frame on that declaration. So why can't that be read into that declaration? So every time we read the declaration of court of law into 62(1)(f) would be a declaration which is time bound. But because it's not tampering with the Constitution. My lord, that is not how how clause F is worded. It does not say the declaration is flowing from any law. The declaration it is saying from a court of law. My lord, the court of law, Right. not declaration under any law. No. I'm saying that whatever that declaration is, be it from the constitutional court or be it from the plenary jurisdiction, that declaration itself is arising out of some violation of a law. Please appreciate my lord. I'm saying it doesn't matter what court it is. The declaration is arising out of some violation of some law, not the Constitution. Either it's the Election Act, either it's the University Act, it's whatever you call it. So then the law now says that any declaration for the purpose of 62(1)(f) when it's used, because it's arising out of a law, would have a period of 5 years. That's what I'm trying to say. There's a bit of a distinction. But my lord, had there been a violation, I understand had there been a violation of the Constitution itself. at least empathize with us. my lord, The kind of things we have to deal with. My lord, I have, your lordships have not only my full sympathy but my full admiration. Your lordship, as somebody said, यहाँ पे खड़े होके बात करना बड़ा आसान है, उधर बैठ के सुनना और फिर लिखना बहुत मुश्किल है. उसके repercussions सबके लिए होते हैं ना. सबके होते हैं. And that is why I am saying, my lord, again, this mess was created by somebody else. It should have been sorted out. On a lighter note, एक चीज on a lighter note, I wonder पाकिस्तान में कोई जज बन पाता अगर ये F वाली क्वालिफिकेशन उन पे भी डाल देते. ये तो कल किसी ये आप सुन लेना. सजेशियस राइटर्स, मुझे तो डर लगता है. मैं तो गुनाहगार हूँ. मैं तो इस पे पूरा नहीं उतरता. और वो कल किसी अखबार ने शुक्र पार्लियामान ने हम पे ये नहीं डाल दिया. किसी को एट्रीब्यूट की हुई थी स्टेट. मैंने कहा शुक्र पार्लियामान ने हम पे ये नहीं डाल दिया. क्या कायदे आजम भी शायद इस पे ना उतरते पूरे. तो पता नहीं कौन उतरता. देखिए सब नैब लॉ में अगर आप देखें, वहाँ पे जो कन्विक्शन होती है, पीरियड बताया गया फॉर 10 years द पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड. जी, तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया टाइम, लेकिन एक एक्ट ने बता दिया कि द पर्सन सो कन्विक्टेड इज डिस्क्वालिफाइड. सर उस लेजिस्लेशन की सोर्स और है ना सर, वो 63(1)(p) है, वो उसमें उनको स्पेसिफिक पावर है. वो इज फॉर द टाइम बीइंग डिस्क्वालिफाइड. सो वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑनेस्ट नहीं होता ना, डिसऑनेस्ट होता है तो सजा होती है. जी, बट उसकी 62 में तो कोई पावर नहीं है कि लॉ पार्लियामेंट लॉ बना सके. देखिए ये बात है, डिसऑनेस्टी की बुनियाद पर नैब से उसको कन्विक्शन होती है 10 साल के लिए डिस्क्वालिफिकेशन. यहाँ पे भी अगर कोई डिसऑनेस्ट हो, यानी ऑनेस्ट ना हो, तब जाके वहाँ पे 10 साल की डिस्क्वालिफिकेशन है. और इसी तरह एक्ट ने, पार्लियामेंट ने एक्ट बना दिया. उन्होंने कहा कि आज के बाद ये 5 साल के लिए डिस्क्वालिफिकेशन होगी, लेकिन सब्जेक्ट टू डिसीजन बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ. सर मैं कह रहा हूँ, इसीलिए तो जो जस्टिस याहिया का सवाल था सर, ये उसके लिए भी रेलेवेंट है. क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन को कॉन्स्टिट्यूशन ने 2 सेपरेट कॉन्सेप्ट्स के तौर पे लिया है. डिस्क्वालिफिकेशन पे उन्होंने पार्लियामेंट को लॉ मेकिंग पावर दी है. क्वालिफिकेशंस के बारे में आर्टिकल 62 में 63(1)(p) का कोई इक्विवेलेंट नहीं. आपने मेरी सबमिशन ये है, आसान कर दिया आपने. फैसल ऑर्डर का केस लेते हुए कोई भी आ जाए सुप्रीम कोर्ट के सामने कि ना प्लीज मुझे डिक्लेयर कर दे सादिक और अमीन, और वो डिक्लेयर कर दे. अच्छा, मेरा ख्याल है आप नहीं करेंगे. आई एम क्वाइट श्योर आप नहीं करेंगे. आप बड़े स्ट्रिंजेंट टेस्ट लगाएंगे. एंड आई वुड से कि जब फैसल वावडा केस में भी सुप्रीम कोर्ट के बेंच नंबर 1 ने था, तो वो अपनी विम्स और उस पे नहीं किया था, कंसिडर करके किया होगा. आई हैव नो डाउट. नहीं, देखिए, वी डोंट डाउट एनीवन्स थिंग, बट यही मैंने बात की ना. मेरे साथी यहाँ बैठे हैं, मेरे साथी यहाँ बैठे हैं. हम किसी पे डाउट नहीं करते. हर आदमी अपनी दानिश और अकल और समझ से करता है. कोई किसी का इंटरेस्ट तो नहीं होता है. मगर जब बहुत ज्यादा डिस्कशन आ जाता है ना, वो खतरनाक हो जाता है. भंडारी साहब, आपका केस आ जाता है और कहते हैं कि सगेशियस है कि नहीं, तो वी वुड हैव हैड टू से दैट यू सगेशियस. मेरे बारे में तो मुझे शक है, आप कह देते कि नहीं है. मैं बस एक फाइनल इस पे अर्ज कर दूं. भंडारी साहब, एक सवाल है मेरा. नैब ऑर्डिनेंस के
अलावा कोई और कानून ऐसा मुल्क में मौजूद है कि जिस सेक्शन ऑफ लॉ के नीचे कन्विक्शन हो जाए, साथ में उसको ये भी कहे कि फॉर फ्यूचर यू आर डिक्लेयर एज ऑफ द कफ मेरे इल्म में नहीं है जी, मुझे नैब लॉ का ही पता है जी, बट आई नीड टू चेक दैट अप फर्दर। मेरे ऑफ द कफ नहीं है, इवन इलेक्शन लॉज में भी नहीं है सर। रोपा में था, रोपा में तो बहुत प्रोविजंस थी, वो इन्होंने खत्म कर दी। अब नहीं, इसमें थी पहले बट वो खत्म कर दी। अब वो सिर्फ उन्होंने कहा जी जो 62 वो सिर्फ उसको डीसीट कर सकता है, डी नोटिफाई कर सकता है इलेक्शन कमीशन। जी जी जी, ट्राइब्यूनल, बट इवन ट्राइब्यूनल भंडारी साहब, कोई ऐसी क्वालिफिकेशन उस जज के लिए भी है जो दूसरों को सादिक और अमीन डिक्लेयर करेगा? क्या वो खुद उसके ऊपर पूरा उतरेगा? Do I have the option of saying that I don't want to answer? Be very careful. Do I have that option, your ladyship? I would prefer to abstain. मैं फाइनल एक मेरा बस ये अगर आप ये करते हैं कि जी समीउल्लाह इज नो लॉन्गर गुड लॉ, इट हैज टू बी ओवररूल्ड, तो उस पे जो प्रिंसिपल, बस उस पे मेरे सबमिशन है कि जी जो उस पे पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शंस हैं दे विल नॉट बी अफेक्टेड। उस पे आप जजमेंट सिर्फ लिख लें। ITO वर्सेस सीमेंट एजेंसी 5 साल तो मेरे ख्याल में पिछले इलेक्शन से गुजर चुके, कब हुए थे? नहीं, मैं तो ये मेरी सबमिशन ये है जी, जो स्टैट्यूट है 232 इन्होंने जो डाला है वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिकॉज इट इज गोइंग अगेंस्ट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आप देखिए, एक तो ये होगा, फिर वो दरवाजा ही खुल गया कि कोई अगर फॉर इंस्टेंस समीउल्लाह बलोच भी नहीं ठहरता है और 232 भी नहीं ठहरता है, तो इसका मतलब कि फिर तो कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं। आप जो मैंने आपको कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की दूसरी प्रोविजंस में से निकालेंगे, मैं तो ये कह रहा हूँ। अच्छा, आप कह रहे हो उसको समीउल्लाह बलोच को हम सब्स्टिट्यूट कर दें? आप सबसे अगर आप उसको ओवररूल करते हैं, ओके, फिर मैं तो ये दो ऑप्शन, जी जी जी, क्योंकि मैं तो किसी एक साइड का प्लीड नहीं कर रहा। पास्ट एंड क्लोज लिखा दो जी, पास्ट एंड क्लोज जी, उस पे ITO वर्सेस सीमेंट एजेंसीज PLD 1969 सुप्रीम कोर्ट 322 at 331, PLD 69 सुप्रीम कोर्ट 322 at 331 जी। और फिर है जी जो बाद में नूर मोहम्मद वर्सेस मोहम्मद इकबाल खान 1985 CLC 1280 at 1284, but 69 Supreme Court is the one that has been followed. और फाइनली ये जो मैं कह रहा हूँ कि कोई स्टैचूट किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की जो इंटरप्रिटेशन की हुई है सुप्रीम कोर्ट ने, उस इंटरप्रिटेशन को अंडू नहीं कर सकता। इस पे आप जजमेंट्स नोट फरमा लें सर। अल जहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान PLD 1987 Supreme Court 84 at 146 and 193. Sorry, at my lord, 146 and 193. My lord, गुलाम मोहिउद्दीन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये इसकी साइटेशन एक दफा है PLD 97 सुप्रीम कोर्ट 84 अल जहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन। दूसरा है जी गुलाम मोहिउद्दीन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान PLD 2023 सुप्रीम कोर्ट 825। और the relevant is at page 897 para 23 by Justice Munib Akhtar. Then actually there is a very good formulation by the High Court in TU Plastic Industry versus Federation of Pakistan 2019 PTD 1542 at 1550, which was then followed, my lord, that judgment has been followed by a division bench of the Sindh High Court in 2021 PTD 542. So the proposition is that the statute cannot undo a constitutional amendment, which is a constitutional provision, which is interpreted by the Supreme Court. Samiullah Baloch has held that this is what 62(1)(f) means. That then becomes, as held in Al-Jihad, that becomes part of the constitution. That cannot be undone by... In the absence of Samiullah, what's the position?
once you do away with some, Then you can do anything. no, but then you have to see whether Parliament has otherwise the competence that's right. in terms of Section 60, And Article see- 62. And I'm saying there is no okay. equivalent No, there I've of 63. understood your point. So law here. Then your Lordship will have to fill in that gap, which your Lordships can do by relying on 63. That's my threefold submission. My Lord, I'm sorry if I haven't come up to your Lordships. No, actually, this last bit was very helpful. You don't mind my saying I'm a very candid person. I will praise when it's required and not praise when it's not required. Maybe I will- But this last proposition was very good. And now, since we don't want anybody's right to be, there must be people here who are candidates for the forthcoming elections. And since they must not violate Islamic injunctions, and I'm sure everyone want to read their Asr prayers, so we will take a short break. Otherwise, someone may file declaration. Your Lordship is You going to give us a My Lord, synopsis? your Lordship will give me a day. I'll अगर आपके पास रफ नोट्स भी हैं तो नहीं, वो बता आपकी दें। मर्जी है। लिखते थोड़ा सा मैंने लिखे हुए हैं, मैं थोड़ा सा इनको पॉलिश कि वो होगा Just ये send it आपने to हमारे व्यूज भी देखे होंगे तो आपके लिए बेहतर होगा अगर जी आप इनको ईमेल दे दें। ये तो मिल जाएगा, वेबसाइट से ले लेंगे आप। मैं कर लूंगा, नहीं तो if your Lordship ईमेल allow- कर दीजिए if your Lordship allows me, कोर्ट एसोसिएट को अगर मैं भेज या ईमेल भी कर दें। ईमेल भी मैं कर दूं। जो आपके लिए आसान होगा। ठीक है My Lord, and I have your Lordship's permission to तो थोड़े से ब्रेक करके हम आते हैं। मुझे इजाजत है जी, मैं Thank you once again. Thank you very much I'm very grateful. for very short notice that we gave you. No, well, And it's an please don't honor. mind It's the an tougher the question doesn't mean we disagree with you. We want to clarify our own thinking. बिल्कुल ठीक है सर, I'm very grateful. Thank you very much. Thank you. Where's the break?